Good evening, everyone. Sainik sir, good evening. Parik sir, good evening. Good evening. So, welcome everyone. सैनिक सर प्लीज म्यूट कर दीजिएगा आपसे गूंज रहा है. हाँ जी. वेलकम एवरीवन. लास्ट टाइम हम लोगों ने मिसकंसेप्शन एंड स्टॉक मार्केट में पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम एक एक पार्ट को प्रॉपर कवर करेंगे. तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है रिसेशन को लेके, रिसेशन को समझना, रिसेशन का इम्पैक्ट कितना होना, कैसे होना. हम ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं. इसको समझने के लिए हमें कई लेयर में देखना पड़ता है. और अक्सर ये भी होता है कि हम दूसरे देशों के रिसेशन के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, उससे भी पैनिक होते हैं. या अपने देश पे होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने इस बार इकट्ठा किया है. हमारे सैनिक सर हैं, इनकी काफी डीप स्टडी है. पारिक जी हैं, इन्होंने भी काफी डीप स्टडी की हुई है. और हमारे विनय जी. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पारिक साहब से. और रिसेशन का स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, किसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं. जी पारिक. Okay. Good evening. It's good to be here again. Hello, Sanik sir. Hello, Vinay. Hello, Vipinji. Hi, Inja. Okay, so today we're going to attempt to discuss global recessions in the stock market. As we know, most financial institutions and analysts are pointing out to about a 30 to 40% certainty of the US entering recession the next year. We know in September the Fed is expected to cut about 75 points and expects this pain point to continue to manage inflation. Along with inflation, we are already witnessing the bullwhip effect that I think Sainik sir was one of the first to call out, with various large retailers experiencing inventory gluts. I think last week itself there was news that Walmart has now cancelled billions of dollars in orders as it aligns inventory levels with projected demand and to reduce exposure to product lines that are out of favor with budget friendly customers. The UK is seeing a price cap of electricity to about £5,000 annually. The government there's going to be a change in government from next week, and it is saying that it has to examine setting up warm banks to help families ride out the harsh winter. In Italy, people are lining up daily to collect food from food banks. Germany and France are experiencing unprecedented power crises. It's almost like, for fans of Game of Thrones, there was a very famous line which says, "Winter is coming." So, well, yeah, winter is really coming and it's going to hit people hard. So, of course, the US economy, $23 trillion, it's the king, which is why, a lot of analysts rightly say that if the US sneezes, the world catches a cold. The China, the world's second largest economy at almost 18 trillion, is currently experiencing slow growth, an unprecedented housing crisis. Several of its large companies have defaulted on their dollar bonds. It's also adopted a zero COVID tolerance policy. There is uncertainty over the October elections. Then, if we look at Europe, two of their largest economies, Germany and France, 4 trillion, 2 trillion something, they are reeling. UK is suffering from its own problems. Now we know that India has officially gone ahead of UK. So India is now is number 3 in terms of global economies. Europe's energy policies have drastically backfired. There is no respite for the Ukraine situation. Europe in general is experiencing unprecedented levels of inflation. UK is seeing inflation that is, I think, the highest in the last 4 decades. Food crises, mortgage costs going through the roof, and of course, electricity. The new government is going to have its tasks completely cut out. Now, Taiwan continues to obviously be in the news because of Chinese aggression. Russia remains uninvestable currently. Brazil, South Africa, they have their own issues. So, there are not really too many corners left where
smart money, big money, whatever word we would like to call it, really have too many options in terms of where are they going to park their funds. There's another thing that, of course, what we are witnessing in the western part of the world is partly due to the energy crisis. But let us also not forget a very, very important point that both that the Anglosphere basically used the pandemic to stimulate fiscal, which worked for them. But unfortunately, because of these other factors that have now been compounded, it has given them major pain points, which we are seeing today. Now, as far as the emerging world was concerned, especially if I talk about India, we unfortunately never had that opportunity simply because we didn't have the resources. I mean, we have a huge population to feed. There's a significant amount of it that needs to be looked after, that needed to be looked after during the crises. So the government, instead of focusing too much on stimulating fiscal, it simply used the crises as an opportunity to carry out certain structural reforms, certain productivity enhancing reforms, adopting digital, a little bit of privatization, basically trying to create some sort of foundation to boost domestic production and help our economy slightly decouple from global pain points. Now, basically, if we kind of put all these factors together, we'll have to look at a combination of history because that'll give us data points or patterns. Let's look at a little bit of the geopolitical scenario, a little bit which I already covered. And let's also look at certain economic points and then try to align them with today's environment to then gauge what is the probability of what is likely to come in terms of recession, the Indian stock market. So, first of all, I think everybody will agree that recessions are a part of normal business cycles. And recessions are good because the deadwood is eliminated, a lot of new opportunities created. It leads the next stage of expansion. But of course, in the interim, there are significant pain points. Why? Because there is contracted growth. So, the first and foremost question is there actually going to be a recession? But I mean, that is not something we will dwell on because, for the most part, most people are in agreement that there is a recession. But I will want to point out this one thing, that how deep and wide will this contracted growth really need to be to qualify as a recession? Because to a great extent, how the Fed manages the hike rate will also determine its depth. Historically, when inflation is high and the Federal Reserve works hard to reduce this, recessions happen. Now, prices lead fundamentals. So, because of this, people traditionally believe that the stock market falling in decline is an indication for most investors that we are headed for a recession. Now, if we talk about the US markets, how do they typically perform when there is a recession? The S&P 500 has risen an average of 1% during all recessions in the US since 1945. That's because markets usually top out before the start and they bottom out before their conclusion. There's another very interesting data point which says that the data of the last 30 US recessions suggests that whenever equity declines of over 20% were followed by recessions within 4 months. These recessions typically lasted 10 months, after which there was a bull run, which even the previous data point corroborates, giving a real return of around 135. When you adjust this for inflation, it roughly meant about 80-85% return. But alternatively, when recessions did not follow within 4 months of the drop in equity, it actually gave a recession much longer, which was as much as even 20 months. Obviously, with a 20-month recession, the return of 135 adjusted for about 85 significantly dropped.
which is why Fed's management is very, very important in determining the depth and the width of any recession. So far in the US, we are not seeing too many drops in employment numbers, though we are very, very clearly seeing the impacts of deflation, that is, reduced commodity prices and lower spending. This could also be indicative that low growth is probably also due to supply side issues, reopening pains, which have been compounded by the energy crisis. If inflation starts lowering by early 23, and if the Fed readjusts its inflation targets, the Fed, I believe, has already done that once. If EU and UK also do that, in all probability, we could look at a slightly softer landing. Now, when we come to India, what is this going to mean? Lower commodity prices, lower oil prices. So, this is very, very good for us because this will help bring down our input costs. Another thing is that if the GDP numbers continue falling, the drop in crude is going to significantly help a consumption driven economy like India's. Typically, during severe US recessions, such as those from 1992, 2000 to 2002, 2008, crude prices crashed significantly. They gave India a fantastic cushion that acted like a pivot. Why? Simply because the US is one of the largest consumers of crude. And when there is a drop in demand, and the demand drop has been as high as about 30 to 40%, it means that for India, Holi, Diwali, and Christmas come together without us actually putting in any effort. So these periods have resulted in a boom in the Indian economy post, within a year or so, and obviously subsequently the markets. As we, I think, as we covered in our previous space when we spoke about misconceptions of the market and the economy don't always have to be immediately reflective of each other. There is another data point. It says that during US recessions, with the Fed managing the change in rate, the dollar yield drops, because of which the rupee strengthens. For India, this typically means a better current account deficit. It gives the RBI slightly better leeway in facilitating the growth story. Cost for capital for Indian goods comes down. So basically, whenever there has been a recession in the US, it has always been very, very beneficial for India. One can almost say that US recessions are a gift that keep giving. Now, if we talk about what India has done in addition to this, so thanks to the few structural reforms, privatization, uh, carried out during the pandemic, because as I said, that unfortunately we were not in a position to bring about fiscal stimulus to the extent that we would have liked. The India's domestic economy seems to be holding up relatively well, though of course we are looking at a slightly slower growth than expected because of the global scenario, obviously. But when we compare it to the global outlook, we still look very attractive. Now, of course, there is always going to be a group of, doomsdayers and naysayers that are going to say that, that there are so many issues that still need to be tackled. We still have so many pain points. We still have so many structural reforms that need to be done. And of course, all of that agreed. But that is the reason why India is part of the emerging markets. If everything was all hunky dory, if we were fully compliant, if all the reforms were already put in place, if everything was perfect, we would not be part of EMs. No, we would probably be part of the DMs. So, on this basis, with India basically being a consumption based of economy, domestic oriented companies should do well. A better rupee, lower oil prices will also help in manufacturing, exports, also create greater opportunities in the domestic market, better credit growth, privatization, the relative cleanup of bank balance sheets that we've had will mean that we will see auto,
banking, manufacturing, ancillaries, FMCG, services, etc., take off. We're already seeing reasonable employment numbers. Our top companies, Reliance, Tata, Adani, etc., they're all talking about much more capex. There was a report, I believe, by McKinsey yesterday when they said that they're looking at India becoming one of the world's largest preferred manufacturing base. And India is going to be home to about 20% of the working population by 2040s. And it said that this is not just going to be India's decade, it's going to be India's century. Now, I think we would like to assume that they know what they are talking about. So there is obviously a significant amount of merit in that statement. Now, as we said, the stock market is not an immediate reflection of the economy, as the market is always forward looking. So, in all probability, this boom that a lot of big money is able to witness, the other factors that are also pointing towards the same, it is very likely that this should reflect first in the markets and then in the economy, because markets are wise, they are forward looking, and they factor in a lot of things much before they actually happen. From a geo-economic or a geopolitical point of view, we are witnessing the rise of a twin supply chain model, one from the US, the other from China. I mean, I guess we can say Cold War version 2. Now, with the passage of the Inflation Reduction Bill as well as green energy by US Congress, there is going to be a reasonable amount of manufacturing shift happening towards countries that are part of the US led ecosystem, of which India is likely to be a beneficiary again. Now, since most of this shift will now be part of the fourth industrial revolution, this shift is going to have far reaching consequences. Another impact of this twin supply chain will be a lot of companies moving away from China as this realignment occurs. We are already seeing a little bit of this happening, and I believe this should start speeding. This will also get reflected in the markets. With the US and China basically also poised for mediocre growth, smart money will choose greener pastures. So, now here again, let us look at some other data. The US is about 26% of the global economy. Its share in the global stock market capital is about 60%. This was about 40% in the previous decade, which means in one decade we have seen a 20% jump. This is a huge gap. 26% global economy, but share in the stock market capital 60%. Of course, as I already said, the US economy is the king. So it's got its tentacles spread far and wide. So we cannot have a direct correlation. But even but nevertheless, this definitely does mean that there is a fair amount of over basically the US being overbought, or one can say that there is a huge gap, and this gap will come into play at some point where there is better money to be made. Now let's look at the EMs, of which India is an important component, and currently, I believe, second in terms of weightage, but in terms of returns, the most attractive. EMs represent about 20% of the global market, but they have only 10% of the global stock market capitalization. So, what does that tell you? That says that this represents an opportunity which is very, very attractive. It's a good value buy, and there is tremendous potential for the upside. Now, most of the funds that come to India, they come through EM funds and not so much India specific funds. I believe the India specific fund figures that were, if part of the MSCI index, were about 6%. We're talking about India delivering a 7% growth, though even that number can be slightly reduced. China, if India was at 7%, China is about 5%. So, and there is increasing call for higher foreign capital allocation towards it. When this happens,
As we already said that there is a huge gap between the US being overbought, a lot more foreign funds will find their way into the Indian markets due to geoeconomics, because I already discussed the twin supply chain, and the second, basic economic reasons. We're already hearing stories of many foreign funds capping Chinese investments. As a result, we are able to see that there is FII purchase which has started. For a very long time, from October last year up until June, we saw significant FII sell. They are back on the purchase aspect since about July. There is also increasing talk of global institutional investors. If there is going to be higher foreign capital allocation towards India, at some point, even the larger, the public pension funds, your wealth funds, your insurance companies, all of these that actually play the long game, considering the growth opportunities that are available, most of them will at least end up allocating some sort of resources here. So, in other words, the combination of historical patterns, data points, the current geoeconomic trends, current geopolitical aspects, as well as the market fundamentals, along with the fact that India has a stable government. It has a government which is forward leaning. Time seems to be on our side. Together, in all probability, this indicates a period of good to very good growth for India, barring any black swan event. And along with it, a period of absolute positivity for the Indian market, providing a tremendous time for wealth creation. Thank you for your time. Thank you, Himja. That was very insightful. Thanks a lot for your time and for your very well prepared insights. Really increase at least my knowledge. Thanks a lot. Next, may I ask Mr. Senek sir to take the stage, please, sir? Yeah, thanks, Vinay. First of all, thanks, Simja. Lot of data which you have given also happens to be in my data sheet. I will obviously eliminate that and try to see what more value addition I can do. Let's start off with very quickly. Let's summarize some parts of your presentation. First of all, we should understand what is recession. People talk of recession, recession. And in India, there is no such recession. We have had recessions which are not defined, and things have gone on with recession, without recession. So what I think people are worried about is the US recession. So there are some people who say, okay, 2 quarters GDP down, so recession has started in the US. So that is generally the the public perception. But if you really want to define recession, recession is not just 2 quarters of GDP being down. It's also reduction in real income, employment, industrial production, and wholesale retail sales. So these are the 4 components which have to be looked into when you define a recession. So who decides recession? There is a body called NBER. This is a private body, just like CMI. So it's not government which decides, or let's say the Federal Reserve which decides what is or defines what is a recession. How many recessions have we seen? Since 1929, we have seen 15 recessions. So recessions are not something we have to really get concerned about. If you look at an average, we've had every 6 years we've had a recession. How many recessions have we seen since 2000? We have seen 3 recessions. The one in March 2001, the one beginning December 2007, and the other one which was the latest one during the Corona time. So typical recessions, as Simja has said, it's typically 8 to 10 months. So 6 to 8 months are most common. The one which was the 2008 the global financial crisis was biggest in the last 20, 30 years, about 18 months. Otherwise, the February 2020 was of 2 months, and the March 2001 was about only 8 months. Now, as I said, we need to look at the 4 components: the peak unemployment, and GDP, industrial production, and the consumption patterns. See, all of them today are far away from showing any recessionary trend, excepting for the GDP, which has come down twice in
2 quarters. So therefore, people are jumping around saying it's a recession. So I will dare say, with whatever information I have in mind, that the full definition of recession will not happen in the US in the next 2 quarters. This is a very controversial statement to make, but this is what I believe. That unemployment or employment will not go below where an average recession happens. At peak unemployment during the recession of 2001, for instance, was 6.3. In 2009 was about 10%, and the last one in 2020 was about 14.7. Today we are talking of a unemployment number of about 3.6. To put it in context, 3.7, that is the lowest in more than 50 years. So you are almost going towards full employment. And you must know that Fed's mandate is dual. You should also control inflation as well as look for full employment. So 3.7% is one of the best you can get in 50 years. So I don't think Fed will try to do too many things to bring in a recession of what magnitude which people are talking about. And Imja, you're very right. The recession is, one should not get worried, not only by statistics. I always believe recession is like your monsoon. You see, every business cycle will have a recession. It is not impossible. It is not possible to not have a recession. And like monsoon, for instance, you cannot be only having summer. If you have only summer, then you will get sunburn. So only in monsoon, as you rightly put it, will the new vegetation grow, and that you require monsoon to break this hot summer season. So first of all, there is nothing to worry about recession. Recessions are common. This one may not end into a typical defined recession. Okay. Now we'll just look at let's say we still have a recession. Let's say I'm wrong. We have a recession. So there are industries which do well in recession. For instance, healthcare, FMCG, consumer staples, basic transportation. You take this in US, we had the recession, big recession, global financial crisis in December 2008. In that recession, 25 stocks of the S&P 500 actually gave a positive return. In India, Hindustan Lever gave a positive return, and a few others gave during that time. But there it was 25, and you see things like Walmart or Amgen in pharma and Vertex Pharma. These gave, even Hasbro toys, for instance, gave a positive return. So to say recessions or runaway, I think is the most silliest thing to do. As somebody said, when the time comes to buy, you won't want to. That's what is happening to many of us. The time has come to buy since May, but nobody wants to buy. Everybody wanted to buy on decline last year at the same time, at around the same time, August, September, when I felt markets were very overheated. People wanted to buy, and they said they'll buy on decline, and then the declines come. They just run away thinking that, now is not the time to buy. This happens all the time. Let me just throw some more light on the last major recession, which was 2008-9. You see, during that time, bank failures are one of the, what shall I say, a cornerstone of any recession. There were 2007, for instance, when recession is supposed to have started, there were 14 bank failures. In 2008, which was a terrible time for Lehman Brothers, there were 25. And in 2009, follow up to the recession, there were 140 banks which failed. So 180 banks failed in those 2.5 years. So we have not seen a single bank failure now. Okay, that is a very, very important thing. And in the current scenario, look at commodities. For instance, people are scared of commodities. Commodities are one thing which, again, another cornerstone for recession. Commodities are in a clear-cut bear market, whether people want to believe it or not. If you are a technical analyst, you know that 20% drop is a bear market. Most commodities are dropped 30, 40, 50, 70%. So they are in a very steep bear market. Whatever rallies you see will get sold into. For instance, oil went up from 92 to 105 recently, last week. It got beaten very badly back to 93. So that is the characteristic of a bear market rally. From 94, 95, it went up to 104 and then dropped back to make almost a double bottom, which I certainly feel that I feel over next few days or weeks, you will see a lower bottom.
So you don't have commodities trying to trouble us, and you have many other components which are not suggesting us to worry. Even the US, I'm talking about. You take hedge funds and retail, which was again a very major problem during 2007-8. None of them are leveraged as it was during that time. And then you take the bull bear indicator, which is the sentiment, for instance. That actually turned into zero in June, the bull bear indicator. This banking system itself is far less leveraged because after the 2007 to 9 recession and the global financial crisis, the Congress passed some bills or passed some laws which made leveraging much more difficult. Corporates are less leveraged today, and wherever they're leveraged, they have got it at very, very low rates of interest. And they've improved their balance sheet like Indian corporates have done. Their corporates also have done. And they still continue to maintain high profit margins. When you are getting into recession, you will not have corporates making these kind of high profit margins. The labor market is tight. The wage increase is there. So wage inflation is there. But that is in one way good, so long as it doesn't really get into a hyper inflation as far as the wages are concerned. So if you look at everything, there is really, I'm really honestly surprised that we are discussing so much on recession in the media. And another very interesting point, let me tell you, since whenever recession has happened, the unemployment numbers have never been at these levels, never. Okay, so at these levels, if you take, I'm talking of 3.7% unemployment numbers, this is not a harbinger of recession. Now you may say, okay, it will happen, the numbers will increase over a period of time, but think of it doubling. Will the Federal Reserve do something to wreck the economy in that manner? I doubt very much. Now, another interesting statistics which I would like to say before I end is, see, this year, for instance, in the first half of the calendar year in US, the Standard & Poor has dropped by about 24.5%. So I went back and saw as to what happened in other years when there was recession or depression, like the 1930s, for instance. There were about 6 instances where the Standard & Poor dropped, the US markets dropped about 20% and above, 20% and above. In 1932, it dropped 45%, 39, 17%, 40, 20%, and so on and so forth. The last time when it dropped 20% was in 1970. You see, 2022, the drop is the second largest drop in US market history. Okay, so what? So what do we derive from it? Every single time when there has been a drop of this magnitude, the market in the rest of the year, that is by December of the year, has gone up significantly. The lowest it has gone up is in 1940 when it went up 6%. In 1932, it went up by 56%. And in 1970, it went up about 27%. Now we are comparing ourselves with 1932 or 1962. You can take the 1962 was about 23.5% drop in the first 6 months. Even there, it went up by 15%. In 1930, of course, it went up by 56%. So that is another pointer to what Himja, you said about what happens 3 months after recession or 6 months after recession. Invariably, you have a bull market. So if I was a long-term investor, when I define long-term, I'm talking of say a year, then I would welcome a recession because I know that there's a bull market waiting, and the bull markets last for a very long time once you get out of the definition of a recession. So therefore, first of all, I don't think there will be a recession in that sense. Maybe it will be a slowdown. And I expect with these commodity prices coming down and the bullwhip effect which you mentioned and which we talked of, I'm expecting disinflation. We did a spaces some time ago on high inflation transforming to disinflation and then finally entering into deflation. Now, deflation again is not bad for the equity markets because whenever deflation has been there, the Fed has eased off. And when you ease off, then the equity markets take off.
But before we go to deflation, which may take some time, I think we will now get into disinflation. Disinflation is basically a reduction of inflation, which is happening already. And I think this 13th, when the US puts in their monthly inflation figures, it will be much lower. Simply, logically, it has to be lower simply because the price at the pump is already down by 20%, retail price. So when you have a drop, the fuel is most important for the American economy at both the retail and the wholesale level. When you see a 20% drop, you know good times are there. Of course, there could be some layoffs. That's always there. When you're talking of 3.6% as the lowest in 50 years, so what if it goes to 4%, for instance? So it doesn't still should not worry anybody. So I personally feel we'll not have it there. Whether we have it, not have it, it doesn't matter. At the end of the day, I think we are in a completely different cycle. I think till now, between say 2010 to 2022, we had a services which was leading the economy. I think in the next 5 years, we'll have manufacturing which is leading the economy. Maybe we'll do a space on that later. The PLI scheme, I think, will be the bedrock of the manufacturing boom. And I don't think people are ready for that. And I personally have invested completely, into manufacturing sector more than services sector. No tech for me, no metals for me, or no, anything to do with servicing. I'm not there. I'm more into manufacturing because I think that is the boom we are going to get. I don't think we should worry. I think we should look forward to the days, weeks, months for a fantastic bull run in Indian markets. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Next, I'd like to invite Mr. Navroop. Uh, Hi everyone. I'd like to only, Hamza gave some very good insights, and Senator also, gave some excellent insights. So I'll only add to what Hamza said. You know that recession are an opportunity of growth for Indian economy. And because during a recession, when the demand cools down, specifically, we already have not only America or parts of Western Europe, which will go in recession, but you also have a slowdown in the economy, in the Chinese economy, which has been largely missed by many people. For the Chinese economy going to its zero COVID policy and the debt bubble, which they are now seeking bailouts, and it is also putting stimulus in its economy, its way of bailouts to bail out the giants, Evergrande and all those real estate giants. So now when the demand goes down in China, demand goes on in Western Europe due to high inflation, right? And demand goes down due to the lag effect on the American economy as well. Then the first casualty will be the commodities. The king of the commodities that we call oil will be the first one to go really there, as Sanika said. It's a bear rally and it will go down, it will collapse. So let's say if oil collapsed to $65 and $70, or let's say around $80 in a next 6 months range, $85. It's down from almost 130 levels in February. That's a fall of 50%. From $50. So now that affects a certain part of Indian industry. One, it helps cool inflation down in India significantly. It arms RBI with a lot of room for maneuver. If oil goes down, our import bill goes down, our forex revenues improve. And if we can stem the rupee, also the rupee fall, then it helps further. Also, the dollar index could go down, which could again be a boon for Indian economy. Third, when the oil goes down, the petrochemical sector in India, right, also gets to benefit because the input cost goes down. So you have the companies or industry in petrochemical India. They also have significant, margins improve because the input cost goes down for them. Especially those who work on generating petrochemicals, plastics, paints, Asian paints. I'm giving you the name of the companies, right? It's oil-based, basically. Then the other thing which also happens is if oil goes down, then and if the supply, and there's a supply glut, as India was also pointing out,
There is too much of inventory in US. There is too much of inventory which is not likely disposed of. So then this could also benefit. If the inflation cools down, oil prices come down, it also benefits FMCG players in India whose margins are going to improve significantly. So there are two sectors which are direct beneficiaries. And if the inflation goes down, the oil goes down, then not only these two sectors benefit, but overall, generally, the consumption in Indian economy starts to improve, which is why the very fundamental that a recession in West, specifically or America, or even a short-term recession in America or Europe, is very good for Indian economy. Also, Indian economy grew at 13% GDP growth in the last quarter, obviously due to the base effect. And then if you on the average of 7% a year, while Europe is about zero point something, America is minus something. So all these factors add up and create a situation where India becomes a lucrative destination for foreign institutional investors. Because when a world enters a recession, where would the wealthy want to park their money? They would obviously not go to China because they are downsizing the positions in China. America is obviously their home market, so they will maximum inflows will go back to their home market. The other thing which will happen is they will like to scout for a emerging market where they can get at least 15 to 20 or 25% return on their equity or their investments. And that India provides a very lucrative place for those kind of savings. So the bears can have some fun for now, but ultimately the bulls will have the final laugh over it. And then also, when one downside which I would like to point out of this recession, though it may be limited, but one downside is for Indian economy is the services sector, and that too IT services, where companies which are primarily linked to companies in the high tech services, tech servicing giants that are linked to American economy, they might face, because of the high inflation costs and everything, the projects could get stalled, the demand could go down, or you don't have that kind of margins in those kind of companies, and which could lead to fall in their operating costs. And we've seen a lot of correction in IT stock. Like Wipro is down 40%, Infosys is down 20%. So there could be a further fall even in IT. But and a fall is not a thing to worry about. It is the best opportunity for retail investors to accumulate. Because if you accumulate at level, whenever IT picks up tax, you will have a fantastic value of at least 60 to 80%. So so now you can imagine this, right? So this is this is one drawback which I see in recession. But otherwise, overall, this recession is pretty good for India, and I do not think we need to worry. We need to invest wisely. We need to invest smartly. We need to pick our sectors, and we need to do are careful. Like check all the fundamentals on the planet. And that is my brief. What I would like to say. Thank you so much. Thank you, Navroop ji. Vipin bhai? आपका ही डेटा है. Sir, एक 5-10 मिनट दीजिए. I'm just reaching home. I'll again get back on the speaker, sir. ओके, तब तक हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं. सैनिक सर, हिंजा जी एंड नवरूप जी, आपस में एक दूसरे से जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करने, जो भी चीज मिसिंग पॉइंट है वो आप लोग कर लीजिए प्लीज. I don't know question to ask of Himja. I think I took off whatever she said, so I'm okay with whatever it is, and whatever Navroop also said. I think I generally agree with their broad point of view. If they have a question, I'm willing to answer. So, yeah, go ahead, India. Go ahead, please. Sainik sir, I had to ask you this. If let's say, from an investor's point of view,
all these doomsday sayers, naysayers say about recession, all that stuff. If you were to point out a thing, I won't ask you to point out stock because that is not the space for. If you were to point out in a broad theme, a single sector where you see the maximum opportunity for retail investors to make up, to invest or accumulate in, what one sector would you pick up? Yeah, Navrat, thanks for the question. I answered this in one way. See, I'm very clear. I'm very clear based on data which I have, and based on the price action that the manufacturing sector per se will outbeat service sector. That's point number one. Now, in the manufacturing sector, you may want to choose subsectors. See, why am I saying manufacturing sector will do very well? Is because I think the PLI scheme, I think people have not understood it properly. And now that it's a year old, and now you will get the incentives for the performance of the corporate sector, mainly the manufacturing. I think PLI sector is there across about many sectors, about 10 sectors. You take pharma, you take, this, what is this, automobiles, and that. So basically, anything which is in infrastructure, manufacturing, pharma, or even your cell phones, all of that is getting, an incentive through the government. Now that if you see the P ratios of some of those top companies, for like Dixon or something which we feel, or Tata LXC for the matter, you feel they're unbelievable and you feel that's too high. For the matter, you take even Adani. So these are the sectors which will benefit by the government's PLI. So for me, after a very long time, the industry is rearing its head and willing to go. Take even automobiles in terms of the Marutis and the Bajaj autos, and you take the auto ancillaries. So they will have to do extraordinarily well, as Sundaram Fasteners or I can name any of them. I'm not naming any stock just to say that you should go and buy. I'm just saying what are the kind of companies which are there in that sector. And domestic farming facing pharma. So all this, will the rewards will come say 1 year, 2 years later, but the market catches it up much before. So I'm very clear that first of all, you should not worry too much about what is happening in the US. Nothing bad will happen beyond a point. My data suggests so as of now. India is a completely different kettle of fish, as Vipin has pointed out. I have pointed out that between 2000 and 2007, India outbeat the US markets, the global markets. So I don't think we should worry too much about it because decoupling, in my opinion, is happening. I think Vipin also agrees with it. Take China, for instance. China has done extraordinarily well in the last 15 years, manufacturing. Nobody has done it as good as China. But look at the stock market. The Chinese stock market hit a peak in October 2007. Today it is half of that. So you cannot just say something is doing badly, so stock market won't go up, or something is doing very well, the core is doing well, and stock market also should do well. So what I'm saying is China is decoupled as far as the stock market is concerned with the global economy for the last 15 years, whereas it's a leader as far as manufacturing is concerned. So that is first thing one should remember. So when you get into India, I am into manufacturing and manufacturing primarily. Of course, I also like to look at hotels, for instance, because you see, once these SMEs start doing well for the conferences, the economy itself improves. So the second tier hotels may do well. You are seeing people are buying into hotel stocks of recent. You can just use some screener or something like that and find out what stocks have gone up about 20% or, and above in the last 2 months. Then you'll get an idea where to invest. Get into momentum. This is only beginning. This is only beginning. True, sir. True. Thank you so much. Thank you. Sir, I had a question. A while back when we were discussing the bullwhip effect, and you rightly pointed out that this is more of a supply side issue. So I think for a lot of people of our generation as well as early investors, maybe we don't have our concepts of inflation, deflation, disinflation, supply side, demand side very, very clear.
also, I guess we've never really needed to dwell very deeply on these points because we have always been part of the globalized world, so to speak. It's only the pandemic that actually, you know, sort of changed everything in the world. And a lot of issues that we are seeing today are also part of, as we call, opening pains, which are supply side issues. So can you please talk a little bit more about demand side issues versus supply side issues, and which is, I think, also one of your reasons why you believe that there will not be a recession. Yeah, first of all, I want to know when you say our generation, am I in your generation or am I out of your generation? Please answer this. Okay. Okay. On a serious note, see, I only go by history, and I'm old enough to have seen the 1987 crash in the US, and even much earlier than that, what happened in Indian markets during Indira Gandhi's time, and today. So I go and see what was happening in terms of sentiment. How was it industrial sentiment? How was consumer sentiment? And of course, the raw data which we get. And I've not only studied India, I've studied US also during that time because my friends went to the US during the 80s. So I'm an 80s student. I passed out my engineering in 80s, mid 80s. So I'm seeing a big change. And see, the current generation, if you could call it, in the sense people who are the born of 1985, the generation X or Y or Z or something, whatever they call it, they probably have not seen the hardships. And for us to think that we will go back to those kind of hardships economically, it is, unimaginable. I mean, it cannot happen that way. To think in 80s that we will go back to 50s, for instance, was not possible. My parents were in the 50s and the 40s. So I think what that wonderful song by Mukesh, I think, is there, which is Kal Ki Baat Chodo, Kal Ki Baat Purani Hai. So I think we should just leave that baggage and just look at what is happening now. So every single year, there is always bad news and there is also good news. Every single year. I have pointed this out in one of my clubhouse sessions where you take 91, 92, any year, I can point out to you that you people will be there who will say the world is going to come to an end, including 2012 when they said the Mayan calendar said the world will come to an end. So you don't, you can listen to either of them. You can either say, the world will come to an end, or you will say, okay, why should the world come to an end, and ask a question. So I have been wrong so many times in the past, and I always believed that the world will end every year, including, as late as 2020. I really thought world will end because my family world was ending because my kid and wife got corona in May of 2020, which is very few people had got it at that time. So that fear made us, make some decisions. Today, if I look back, I feel, there is no need to fear that much. Obviously, one has to be concerned. Concern is different from fear. So if you look at data, if you look at how markets have behaved, how economies have behaved, and more important, how politicians have behaved, or the people in power have behaved. So it's in everybody's, interest today that the economy should do well. You see, this was not the case before 90s. Only when, Bill Clinton said it is the economy stupid. That was his, slogan when he ran for election in 1982. I'm talking Bill Clinton. Hillary Clinton ran in 2016. So people have realized in power that economic growth is what will bring them votes. Okay, very cynically, but that's how it is. So they would like to keep the economy chugging along using all kinds of, methods. So this was not there even in the US in the 1920s, for instance. So people talked of something else. People talked of geopolitics, globalization, monarchies, all that. So when you have changed, when the scenarios change, your thinking also has to change. If you're going to say, no, it happened in 92 like that, in 94 like that, or in 2000 like that is probably not the right way of looking at it. So today, when we talk of the bullwhip effect, people have not understood what it is. So when you are going to increase, out of fear, if you're going to increase, or if because of greed, you're going to increase your supplies, then you see you increase because of greed, your supply. I mean, let's say your orders.
And suddenly you see the fear and people have moved out, moved away, and so there is no demand. So you have to have disinflation. There is no way. See, last year, see, I'm not trying to praise myself, but last year I pointed out that these Fed Reserve fellows are all wrong. They were talking of no inflation or it is only going to be temporary. It was visible that inflation is going to increase because if you look at lumber, for instance, which is housing related, lumber prices were rising, or you take the Baltic Dry Index was rising. So you cannot have no inflation or inflation only for some time, and these kind of factors are showing you. So I happen to be right. I'm right only 50% of the time. I was right then. Now again I'm seeing the same data which is down. So how can you have inflation when commodities are in a bear market, a deep bear market? Just not possible. So you may have some corrections to the bear market. So I'm not able to understand how people are talking of, inflation will wreak havoc in India and US, and RBI also, I think, is behind the curve. RBI also is panicked. They should have panicked. They should have taken action last October, November when things were heating up. They didn't do that. They panicked only in May. And now they're trying to show that they are able to control, they want to be ahead of the curve. They don't need to be. Inflation with good monsoons this year, nothing to really look at it that way. I think we are missing out a fantastic opportunity. I don't use these kind of words. I'm a very cynical guy. I'm generally more bearish than bullish. I've never been so bullish in my life. I cannot say more than that. And if I say it's an empty statement, if you say think it's an empty statement, look at the prices. Look at the prices. Bhav Bhagwan hai and all that kind of thing which we spout. The prices are telling us, boss, I don't want to go down. I want to go up. Do you want to buy it or not? It's saying buy me. Last year they were saying sell me. The prices were telling you. The same 16,000, it's the same 17,500 index was there last year. People were saying we will buy till eternity because we feel it will go to 20,000. Today, if I buy at 17.5 with an improved PE ratios, I'm saying they are saying it will go to 14.5 or whatever number, 7.5, whatever numbers they're talking. The data tells you clearly, it is shouting, please buy me. Now, more than that, I can't say. I can only say that the environment in India is slowly and steadily improving, whether we like it, the politician or not, but the politicians are seeing that the economy should be on a sounder footing and they are succeeding. And in the stock market, I would like to use it to my advantage if others, whatever they may say. So, yeah, I hope I've answered your question. Yes, sir. Thank you, sir. Vipin bhai, I'll just take 2 minutes to keep my points. Sainik sir. Himja, I'll just take 2 minutes. Just regarding the stock market and recession, just say recession जो बोल रहे हैं, जो चल रहा है, I think we have to look at economic data. Recession कोई हवा में नहीं आता है. I think right now what India, first I'll specifically talk about India. I think India is in the very early stages of expansion. If you see business cycle, if you see economic cycle, in the last 10, 12 years, we've just consolidated. There was cleanup of balance sheet, as mentioned numerous number of times. Few companies failed and whatever has happened, there's not been any good rise in capex cycle. And I think 2020 was the climax of whatever was happening in the last, before the prior 10 years. And I think we are in the very early stages of capex cycle in India. So in India, recession is totally ruled out. In my opinion, I can say it with 99.99% surety, looking at everything around. And with regard to data, if you see in US, I think inflation was already high last year too. But I think the war triggered a very, fear expectations basically. As stock market is all about expectations that the inflation is going to go out of control and the Fed is going to lose control of the rate cycle as well as inflation. So I think that was the reason the market was panicking. And once the market stabilized, once they realized the Fed is, trying to get this monster under control. And as we are seeing in the data, the CPI constituents of US and other data, if you see the housing starts, whether you see consumer credit over there, all are just cooling off. You cannot say that as recession. That is a engineered cooling off the economy by the central bank, because they could not control the supply side. They needed to do something to cool off the demand side.
So I think US also is quite healthy. It is not nowhere near recession right now. If you go by the data and if you go by the monthly, weekly data, whatever they report, they are consumer based economy. They really and the next is Europe. I think the weakest link today in the world is Europe, and I think that is more man-made than that something natural or something uncontrolled is happening. And I think Europe will have to rectify its problems by its own, and the central bankers there will have to get aggressive, increasing the rates over there. People are expecting that the Fed, looking at what Europe is doing or going through, Fed will hike aggressively. I don't think so. That's the case. Every central banker has their own mandate and their own GDP and their own inflation rate to look after. And regarding stock market and recession, I would just say that the stock market is always forward looking. I think the correction, if you talk about indices, yes, there's been a 20-30% correction in Indian indices in the world over, in America also. But I think the particular stocks have corrected more than 40, 50, even some stocks have corrected by 60%. I don't think so. Unless the world is going to end, we are going to go to 80, 90%. In the heights of 2008 financial crisis, when there was a systematic failure where the banks were not trusting each other, they were not lending each other on overnight facility. I think that time the markets crashed. That was a systemic risk. This is more of an economic uh, blip, I think, in the world, what we are going through, and it is basically part of the cycle, I think, because for the last 12 years the central bankers were worried about low inflation. They were trying to push up the prices, and now after the pandemic they printed too much money, and I think the inflation has gone way out of control, and now they are taking steps to bring it down. So I think overall, I think India is in a good stage right now. If stock markets are any guide, I think anybody, if you also betting on somebody, you will bet on the expectations based on today. I think India, as Himja and Vijay sir also said, that India today's position probably one of the best in future, and that is why I think most of the foreign fund will flow into India, whether it's an FDI or FII, whatever you might call it as. You would like to bet on the horse whenever you're in a particular situation. And right now Europe is not looking good, US is good, but China is still in some kind of a issue with Taiwan. So I think India is the best investment opportunity as far as the world today, with 150 crore population. The best prospect lies in India. So I think there's no need for FOMO. I'm sure many people are in FOMO right now. People are not able to digest this rally and still are thinking that this will fail and the market will eventually crash. But I think market has given enough opportunities between May and June for you to realize, if you're not following the media, social media, and if you're following commodities, what is making the prices go up or higher. If crude at 140 couldn't damage India, I think at 90, 80, I think we can sustain it. I'm sure if we cannot expect crude to be at $40 or $30 what it was during 2004 2008 cycle. So I think say about 70 to $80 also is good for India for sustained growth. And I think that's all I can say, sir. बस इतना ही कहना था मेरे को तो बस. विपिन भाई. विनय, आपको दो चार्ट मैंने बोला था, एक तो करेंसी का है और एक टीटीएल पे जो डिस्कस हुआ था, तो आई थिंक उससे आप जो भी डेटा आपको समझ में आता है वो आप एक्सप्लेन कर दो. हाँ जी सर. TLT basically it's ETF for trading in bonds in US market. That basically has been in a falling cycle against the most defensive asset prices in the world since 2015. Basically, it made a bottom in 2010. Then there was a good rally in bonds till 2016, and since then, at in 2020, and now we are bottoming. We are again seeing those prices in the bond prices. That means it's the cheapest against the most defensive asset prices in the whole world right now. And right now, we have heard that we have seen the biggest rout in the bond market since 1980, bear market. And but people forget to say that what happened after 1980, what happened in the market. There was a big rally. There was a big, the debt became more attractive, and funds flowed into bond market. Right now, as you know, the bond market is falling because inflation is rising, and people are expecting the interest rates to go higher. So we're seeing a sell off in bonds as a result of yields climbing higher. So if this bond market gets into a rally mode, that means the inflation expectations by the big fund managers or the big guys will ease, and money will start flowing back into your bonds, American bond market. And the next is there's a chart where USD INR versus dollar index. Here, if you see the chart, it's been in a secular bull run.
basically USD INR versus dollar index being a secular bull run means that the USD INR has been climbing. That means rupee has been weakening against the dollar and versus the dollar index also. And right now, if we can see those charts as Vipin Bhai has posted just recently, that the trend of last 23 years is breaking down now. So basically, the USD INR is now getting weak against the dollar. That means rupee is strengthening despite of the dollar index strength. And the dollar index strength, as we all know, is a combination of six currencies, of majority of which is euro and GBP and Japanese yen. And euro and GBP is both the economies are doing bad. Their central bankers are quite behind the curve. So what we can expect, so that's why I think Indian rupee is now outperforming the dollar index. And I think this is one more thing where the price action is telling that where the money is flowing out of and where it is flowing into. I think, as we said earlier, that next a quarter or two later, I think there will be a good optimism and good data points where today majority are not believing in the India's growth story and everybody is thinking nahi zyada ho gaya. I think next 2 quarters you will get to know the sufficient data that how much money is flowed where and how much money, why it has come here. I think that will take a quarter or two before we see the evidence of the same. And as we know, the smart money always gets in first, and then the masses follow. Uh, that's it, Weapon Bhai. थैंक यू विनय, थैंक यू हाँ जी, सैनिक सर, थैंक यू पारिक। तो मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ठीक से कवर किया है 1 घंटे में और काफ़ी डेटा पॉइंट था। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो भी है वो लोगों के क्वेरी से एक्सप्लोर होगा। तो क्वेश्चन आंसर के जी लिए सर, हाँ, इनविट जी आई। सर, जी सर, रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज सेंड इन रिक्वेस्ट। पहले आप लोगों के रिक्वेस्ट थे बट यू आर नॉट टेकिंग इन, देन यू कैन प्लीज सेंड इन नाउ। हेलो। हाँ जी कमल, हाँ जी कमल जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन विपिन जी से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूएस मार्केट फ्राइडे को खुला तेज, ऊपर गया और फिर 32,030 पे एकदम से सेल ऑफ आता है और वो 31,400 के नीचे चला जाता है। हालांकि मुझे भी ये लगता है कि डो ओवर सोल्ड है, चलना चाहिए, बट यूएस मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट वीक हो जाता है। इंडियन मार्केट में इनर स्ट्रेंथ बहुत है, पर उसका पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, एफआईज की सेलिंग फिगर सारे उससे कोरिलेटेड है। कमल जी, मेरे ख्याल से विनय आपको ठीक से समझा देंगे। विनय। हाँ जी सर, कमल जी देखिए, जो कल जो सेल ऑफ आया था, देखिए कल दो चीज हुई। एक तो जो यूएस का डेटा पॉइंट आया था उसके पीछे रैली हुई कि ये सोच के कि डेटा पॉइंट थोड़ा सॉफ्ट आया है तो फेड विल नॉट गो फॉर हायर देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मार्केट। अनयूजुअली जो हाई हाई बड़ा हाइक बोल रहे थे, पीपल वर प्राइसिंग इज 50 to 75। तो कल डेटा सॉफ्ट आने से द चांसेस ऑफ अ वेरी स्टीप हाइक उससे कम हो गया, तो उससे मार्केट ने रैली किया। दैट वाज लिक्विडिटी बेस्ड एंड दैट वाज इकोनॉमिक बेस्ड। नेक्स्ट जो ये सेल ऑफ आया था, दिस वाज ऑन द न्यूज ऑफ बेसिकली रशिया कटिंग ऑफ गैस सप्लाईज टू यूरोप ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम लीकेज इन द पाइपलाइन। Okay, so basically it was not a economic news or any kind of liquidity which is dominating the market, but right now it was basically this led to a sell off in euro में selling आ गई और आपके जर्मन मार्केट में सेलिंग आ गई। बट जर्मन मार्केट फ्यूचर्स ने कल का लो नहीं तोड़ा, यूएस मार्केट ने कल का लो तोड़ के उसके ऊपर बंद हुआ है। तो आई थिंक क्या होता है मार्केट में, जब इंपॉर्टेंट टर्न्स पे रहते हैं तब मार्केट बहुत न्यूज़ फ्लो ड्रिवन रहता है और वल्नरेबल रहता है यहाँ पे। और जो बड़े पैसे वाले रहते हैं वो लोग, अब ये चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए, अब इसके अंदर कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसके अंदर क्विक सेल ऑफ और क्विक रिकवरी भी हो जाती है। एंड अगर आप देखेंगे डाउ नास्डैक वगैरह के अंदर सबने सबका कल का लो पकड़ के रखा है। और देयर वाज बेसिकली इट वाज अ न्यूज़ ड्रिवन, इट वाज नॉट नथिंग इकोनॉमिक रिलेटेड नॉर फेड रिलेटेड नॉर एनी रिसेशन रिलेटेड, इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन रशियन न्यूज़। और बाकी आप जो बोलते हैं कि इंडियन मार्केट को और यूएस मार्केट का रिलेशन रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है, दैट इज द मदर मार्केट। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वी फॉर अस टू गो इन द राइट डायरेक्शन।
क्योंकि अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो यहाँ पे पैसा डालने वाला भी रुक जाएगा कि भाई थोड़ा टाइम के बाद डालते हैं. It will not change the direction of the market, yes, but the pace of the market going up will stop because अब जैसा पैसा डालने वाले हो आपको दिख रहा है यार अमेरिका में ऐसा हो रहा है या यूरोप में ऐसा हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, वहाँ पे मार्केट रिएक्ट हो गया, तो आप रुक जाओगे ना. इट विल नॉट, यू विल नॉट चेंज योर माइंड कि इंडिया को छोड़ दो बोल के. यू विल जस्ट वेट, लेट इट स्टेबलाइज एंड देन अगेन आई पुट इन सम मोर मनी. तो इट वाज मोर ऑफ अ, आई थिंक न्यूज बेस्ड था, तो ज्यादा कुछ उसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि न्यूज बेस्ड है, सब कुछ मैंने मान लिया, बट एफआईज 2 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहे हैं. कल तो उनने कैश के अंदर भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की. ये कहाँ से डेटा आया है? कल तो 8 करोड़ की सेलिंग थी. सॉरी, कल नहीं, परसों का 2200 करोड़ का कुछ फिगर आया है. पर कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर्स के अंदर तो वो कोई दिक्कत बड़ी नहीं. सेलिंग कर रहे हैं ना विपिन भाई. 4000 2000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं. सुबह M2M प्लस में होता है और बाजार बंद होने के टाइम पे माइनस में आ जाता है. देखिए कमल भाई, मार्केट ने कभी भी स्ट्रेट नहीं जा सकता, कभी भी नहीं स्ट्रेट नहीं जा नहीं, बट सकता, क्योंकि अगर अगर जर्क नहीं लगेगा, ये सब स्टेप नहीं होंगे, तो मार्केट कभी चल भी नहीं सकता. कई बार आप देखो कोई मार्केट या कोई स्टॉक एक तरफा भागता है, एक तरफा पर डे भागता रहता है, पर डे रोज भाग रहा है 5% 10% के सर्किट वाला स्टॉक, उसका डाउनफॉल भी दिखना एकदम बिल्कुल वैसा ही होता है. एक नेचुरल नॉर्मल मार्केट हम लोग उसको कहते हैं कि जब वो कोई भी चीज पे कोई भी डेटा जो भी पीछे का आया था, एक अच्छा मूव हुआ, आपने 18,000 ऑलमोस्ट टच किया, एंड उसके बाद मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. इसके पीछे बहुत से प्रोसेस होते हैं, बहुत ही डिटेल लेवल का मैटर है. आप इसको अपने थोड़ा कॉमन लेवल पे समझ लीजिए कि बड़े आदमी को डराना है, छोटे आदमी से माल लेना. सच्चाई तो मार्केट की यही है ना. सस्ते में माल खरीदना, महंगे में बेचना. समझदार आदमी खरीदता है, बेवकूफ आदमी बेचता है तेजी के माहौल में. तो ये सब चीजें तो बेसिक है ना. और इसके अलावा चलेगा कैसे मार्केट? नहीं अगर हर कोई एकदम बुलिश हो गया तो फिर तो कोई ट्रेड होना ही नहीं पूरे नहीं, दिन, कोई बेचने वाला वो ही मैं नहीं. मान रहा हूँ, पर मार्केट क्या है, हम्म. 17,700 के आसपास जाते ही हर बार सेल ऑफ फेस कर रहा है. 17,730 हाँ का रेजिस्टेंस जो है, उस पे भयंकर सेलिंग आ जाती है, और सेलिंग ऐसी आ जाती है कि चुटकियों में बाजार को 125 150 निफ्टी गिरा देते हैं. बिल्कुल चलता रहेगा, ये बेसिक वोलेटिलिटी है. और किसी भी बुल मार्केट में आप देखिए स्ट्रेट ये तो कुछ है ही नहीं. जब हम लोगों ने 2003 से लेकर 2007 के 600% के अपमूव को देखा था, उसमें आप बिलीव करो कि मार्केट आज सुबह खुलता है, क्या हुआ, आरबीआई ने सीआरआर हाइक कर दिया 10% डाउन. फिर मार्केट सोचता है क्या करें, क्या गलती कर दी, अच्छा कुछ गलती कर दी. मार्केट वहां से रिकवर करता है, बिलीव करो 10% प्लस चला गया पिछले दिन से. तो मतलब 20-20% की वोलेटिलिटी हम लोगों ने इस मार्केट में देखी. तो अभी ये बिहेवियर है, ये कॉमन बिहेवियर अभी है. विक्स भी बहुत हाई आपको ये हुआ हुआ है. समझना पड़े, ये सब कॉमन है. आप बहुत छोटे से नजरिया से देखोगे तो आपको मार्केट नहीं समझ में आएगा. जब तक आप थोड़ा सा दूर नहीं जाओगे, थोड़ा वाइड होकर नहीं सोचोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा. ट्रेडर्स हमेशा मार्केट को में लिक्विडिटी देते भी हैं तो लोगों को बिना वजह डराते भी है. किसी चीज का कोई फायदा होगा तो नुकसान भी होगा. बे इंतहा लिक्विडिटी हमें ट्रेडर से मिलती है जो 2 रुपया 4 रुपया के लिए आते रहते हैं, बाई सेल करते रहते हैं. बट इनके कारण आपको एंट्री मिलती है, आपको खरीदना है, आपने खरीद के रख लिया, उसमें से आपको बेचना है, आपने बेच के निकल गए, अब वो आपस में करते रहेंगे मैनेज. तो ये चीज समझिए ना कि आप इतने क्लोज लेवल पे आप किसी को म्यूट करना चाहिए, शायद किसी की तरफ से बहुत बैकग्राउंड नॉइस है. मिस्टर तो सत्यम आपका म्यूट करिए प्लीज. हाँ, ये बहुत ज्यादा, ये सब कॉमन है मार्केट की, ये तो कुछ नहीं है. अगर आप जस्ट पीछे का चलो, आप जून और जुलाई का महीना था 2021, मार्केट 15,450, अब 15,850, पूरा 2 महीना था, 60 कैलेंडर डे, 40 ट्रेडिंग डे. पता है इसके बाद क्या हुआ है? सीधा 18,600 की रैली हुई. तो 2 महीना क्या कर रहा था मार्केट? सोच रहा था कि किसी को बेच रहा था कि किसी को खरीद रहा था. मार्केट ऐसे ही चलेगा.
मार्केट ऐसा नहीं है कि इतने माइक्रो लेवल पे आप सोचोगे ना कि अरे कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, आप उसका मेन विजन पकड़ो। कभी भी इस तरह से यहाँ पे सेलिंग आ गई तो यहाँ पे बाइंग, ये सब ट्रेडर का काम है। अरे ठीक है, विपिन भाई, एक्चुअली हाँ बोलिए। मैंने है ना, हाँ बोलिए। यूक्रेन वॉर जब हुआ था ना, उस समय मैं हम्म। यूक्रेन वॉर से पहले ही बाहर निकल गया था, पर मैंने उस समय बहुत बड़ा लॉस खाया है। मेरी ओवर पोजीशनिंग थी, ओके। पर मैंने बहुत बड़ा लॉस खाया है। तो मैं बाजार से अब घबराने लग गया हूँ। आपको याद होगा, मैं आपको क्लोजली उस समय भी बहुत फॉलो करता था जब जून के अंदर बाजार गिरा था, ठीक है ना। ओके। बाजार ने, हाँ। आपने देखा, निफ्टी इतनी नहीं गिरी थी जितनी मार उसने ट्रेडर्स को दी थी। हम्म। निफ्टी 100 पॉइंट गिरती है, M2M लोगों का 4-4 5-5 लाख रुपए आ जाता है। तो राइट इस है वजह तो से थोड़ा घबराया हुआ हूँ। अभी तो मेरी 1/3 पोजीशन है जो उस समय थी, उसके हिसाब से। देखिए, वोलाटिलिटी आगे आपको और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये बुल मार्केट का बिहेवियर है। उसको माल नहीं मिलता बिना डराए। छोटी सी न्यूज पे कैसे रिएक्ट कर दिया बिना वेरीफाई किए, और अनवेरीफाइड न्यूज पे जब रिएक्शन होता है, बहुत मजेदार रिकवरी होती है। इतनी शार्प रिकवरी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये, अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आप आत्महत्या करने निकले ही हैं पहले से। आप अगर कैश में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, मेरा टारगेट किसी तरह सिर्फ, की कोई देखो दिक्कत। विपिन भाई, लॉस डेरिवेटिव में ही हुआ है। एंड यू ऑल्सो नो, कैश इतनी जल्दी रिकवर करके नहीं दे सकता। वो रिकवरी भी डेरिवेटिव में ही हो सकती है। तो बस मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं मेरी रिकवरी कर लूं और मैं डेरिवेटिव के अंदर धीरे धीरे काम बंद कर दूं। मैं ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे पहला भ्रम है जिससे आज तक बहुत कम ही लोग निकले हैं। जिसने नुकसान दिया है उससे कटो ना, उसको छोड़ो ना आप, वो और देगा। जब तक आपका ट्रेडिंग बंद नहीं हो जाएगा तब तक वो नुकसान होगा। आप उधार ले आओ वो भी जाएगा, बैंक से लोन लेके आओगे वो भी जाएगा, और ये मैं पक्का बता रहा हूँ ये होगा। जिस चीज से नुकसान हो रहा है उस काम को छोड़ना है। जब तक आप वो नहीं छोड़ोगे, सही रास्ता, गलत से सही रास्ता वो है ही नहीं यार आपके लिए। कितनी बार समझाया, ठीक है गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब आप सही रास्ता पकड़ लो, सब समझ में आएगा कि क्या करना है आगे। देर में होगा, गलती हुई है तो उसको झेलो, देर में रिकवरी होगी, चलेगा, लेकिन और नहीं डूबना चाहिए। और कोई नहीं कमाया डेरिवेटिव में, सब झूठ बोलते हैं। I know a lot of people who have made good money in derivatives. I know. ओके, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मेरे को ऐसे लोग भी पता हजार। है, जब आपने बोला था ऑल टाइम हाई के बाद बाजार खराब है, तब मैं आपको फॉलो नहीं करता था। आई यूज टू थिंक दैट यू आर अ बियर, यू टॉक ओनली बियरिश, ठीक है। आई डोंट यूज टू फॉलो यू। बट मेरे को और भी लोग बोलते थे कि बाजार अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। पर बाजार ने मार देनी चालू की जनवरी से, उससे पहले मार नहीं दी। अक्टूबर से दिसंबर गिर के चल जाता था, शेयर चलते थे। पर जनवरी से ऐसी मार दी कि बिल्कुल कमर तोड़ दी लोगों की। देखिए, हर चीज का एक इस्तेमाल करने का तरीका होता है। अगर आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आते हैं, अगर आप किसी को देखते हैं तो बस आप फॉलो करते हैं, उसका 4 दिन का पीछे का देखते हैं रिपोर्ट, और उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं आप? जाइए पीछे की रिपोर्ट, अगर किसी इंसान के बारे में मुझे जानना है तो मैं तो जाके देखूंगा ना कि पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से क्या कर रहे हैं। पैसा का मैटर है, किसी को कैसे फॉलो कर दे। और मुझे क्यों फॉलो किया गया, इस बात के लिए मैंने तो हमेशा बोला है कि आपको आइडिया लेना है, सिर्फ आइडिया देने के लिए कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करते नहीं हैं, क्या नहीं, क्या डोंट प्रोसेस फील है, इट देखो ये ऑफेंडेड, होता डोंट है। फील इट ऑफेंडेड। नहीं, ऑफेंडेड का मतलब ही नहीं है, ऑफेंडेड का मतलब ही नहीं मेरे है। को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, दिस इज द ट्विटर हैंडल आई एम फॉलोइंग, यू कैन ऑल्सो ट्राई।
देन उस समय तो मैंने आपके ट्वीट्स देखे तो आप यू आर बियरिश ऑन द मार्केट, और मुझे बियरिशनेस उस समय लगती नहीं थी, पर हुआ वो जो आप कह रहे थे। अभी अभी जो आप कह रहे हो वही हो रहा है। जून के अंदर थोड़ी सी मार पड़ गई, जून के अंदर आपने भी माना कि आपको एग्जैक्ट लो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो लो मार के फिर चला, और फिर चला तो रुका नहीं। आगे भी नहीं रुकेगा। लोग डराने वाले रोज बैठे रहेंगे, रोज मेढक की तरह टर टर आके स्पेस पे ट्विटर पे सब बकवास करते मैंने रहेंगे। घबराहट के अंदर एक बार अपना पूरा पोर्टफोलियो साफ कर दिया था 15,600-700 पे, और फिर वो निफ्टी 3 दिन जो गैप अप हुई, मेरा बिल्कुल दिमाग बदल गया। मैंने उस समय समझा कि बाजार में अब लॉन्ग रहना चाहिए, शॉर्ट सेल ऑफ करने का टाइम नहीं है। कमल जी, हम लोग के पास बहुत ही लिमिटेड हाँ टाइम है, ठीक है। हमें और लोगों से भी बात करनी, लेकिन मेरा सजेशन जो आपके लिए है वही सबके लिए है और आगे की सारी पुश्तों के लिए है। डेरिवेटिव में काम मत करिए, कोई फायदा नहीं है। यू कांट विन, यू कांट विन। कैश में करिए, ब्रांडेड स्टॉक में करिए, सोच समझ के करिए, और जिस इंसान को फॉलो करिए उसका पूरा पीछे का 2-4 साल का खानदान देखिए। कुछ लोग को आप चेक करेंगे, बहुत पसंद आएंगे, तो उनको आप देखेंगे ना कि पिछले 4 साल से वो बेरिश ही है। कुछ लोग को जाकर देखिए, पिछले 4 साल से बुलिश है, वो कभी बेरिश भी नहीं हुए, कितना भी गिर जाए बुलिश ही रहेंगे। पहले जाके उनका खून खानदान देखिए, तब समझ में आएगा कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है। और फॉलो करिए किसी को तो खाली क्लू लीजिए, उसको पकड़ के उसको मान के मत बैठिए। कोई आदमी यहाँ भगवान नहीं है, भगवान के पास इतना टाइम नहीं होगा कि ट्विटर पे टाइम पास करेगा। ठीक है कमल जी? ओके जी। विपिन जी, मैं सत्यम बोल रहा हूँ। मिस्टर सत्यम, हाय सर, नमस्कार। और विपिन जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं रिसेंटली आपको फॉलो किया है और मैंने काफ़ी पुराने पोस्ट आपके देखे, नए जो ट्वीट करते हो वो भी देखे, और कहाँ वहाँ पे बहुत सारी ऐसे एक ग्रुप की अच्छी आइटम है जहाँ पे आपने बहुत ऐसे लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हैं, और वो भी बहुत ही लुक्रेटिव, एकदम जूसी लगते हैं। और वो सब स्क्रिप्टों में मैंने खुद से कैश में भी इन्वेस्टमेंट किया है और मैं थोड़ा F&O भी करता हूँ। तो सर, मेरा आपसे ये कहना था कि अगर 5-10 साल का व्यू है तो सर थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें कि ये वॉलेटिलिटी हम डाइजेस्ट कर सकें। क्योंकि समटाइम्स वी जस्ट, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं आपको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, मैं मेरा खुद का भी थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा मेहनत भी करता हूँ, बट ओवरऑल बायस हो जाते हैं वो व्यू को लेके। तो थोड़ा आरएमएस वगैरह रिस्क मैनेजमेंट समझाएंगे तो अच्छा रहेगा कि ये वॉलेटिलिटी आने वाले टाइम में हम कैसे डाइजेस्ट करें, कि जैसे थोड़ा डर भी थोड़ा लगे और पोजीशन भी होल्ड कर सकें। प्लीज सर। ये सत्यम जी, सबसे पहले ना जो भी थोड़ा बहुत डेरिवेटिव करते हैं ना, यही थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बड़ा हो जाएगा। जब कन्विक्शन बढ़ जाएगी ना तो लगेगा छोड़ो ना यार, एक मौका मिला है, चौका मारते हैं। तो इस चौका मारने में सब आउट हो जाते हैं। तो इसको आप एकदम बंद कर दीजिए। अभी कोई आपने कोई ऐसी बातें नहीं बताई कि आपने बहुत नुकसान किया, तो आप ठीक ठाक कंडीशन में बैठे हैं। कैश में ही रहिए, ब्रांडेड स्टॉक में रहिए, और कभी भी डर लगे, हमने लास्ट टाइम कितनी बार स्पेसेस में बोला कि अपने हर चीज की इज्जत करिए। मान लीजिए किसी स्टॉक का 100 शेयर पड़ा है आपके पास, आपको डर लग रहा है 25 कर दीजिए, घट सेल कर दीजिए। थोड़ा और डर लग रहा है 25 और सेल कर दीजिए, सस्ता में मिल रहा है वापस खरीद लीजिए। ऐसे करके आप उसको अपनी कॉस्ट घटाइए, बढ़ाइए, मार्केट के साथ एंजॉय करिए। आप बने रहिए अपने व्यू पे, और जो भी ऊपर नीचे होता है उसके लिए थोड़ा पैसा अपने पास रखिए, और अपने ही स्टॉक जो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, गिर सकता है, तो अपने डर को इज्जत दीजिए, 25 शेयर बेच दीजिए। डर की कंफर्मेशन मिले 25 और बेच दीजिए, और अच्छा नीचे भाव मिले लेना शुरू कर दीजिए, 10-10 शेयर 20-20 शेयर करके उठा लीजिए वापस सब। तो ऐसे करके ना आपको बहुत मौके मिलते हैं मैनेज करने का। अगर ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हैं। नहीं एक्टिव हैं तो छोड़ दीजिए आराम से। जो भी है आपके पास, अगर ब्रांडेड स्टॉक है तो बढ़िया है, खूब मिलेगा पैसा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर। मिस्टर राजेश। हेलो हेलो विपिन सर, हाँ जी, कैन हाँ यू जी, हियर मी? हाँ जी।
अच्छा, मैं है ना, एक व्यू है मेरा, तो वो मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा था। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि क्रैश मतलब मार्केट क्रैश होएगा या रिसेशन आ रहा है, क्रैश होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब इंडिया लास्ट 2 साल से पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब यूएस पूरी दुनिया की मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। इवन हर एक टर्म में, मतलब महंगाई में कम महंगाई है, ग्रोथ में ग्रोथ ज्यादा है, और मार्केट भी आउट परफॉर्म कर रही है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि बिग कैश इनकमिंग, मतलब अगर लगातार इंडिया अगर ऐसे आउट परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड की मार्केट को, तो फिर एक टाइम के बाद तो फिर जो वर्ल्ड जो कैश है वो तो देखेगा ना कि ग्रोथ कहाँ है, जहाँ ग्रोथ है उसी तरफ आएगा। ग्रोथ तो अब चाइना में नजर नहीं आ रही, यूरोप में नजर नहीं आ रही, और मतलब बहुत ही कम कंट्री हैं जो इस लेवल की ग्रोथ जहाँ दिख रही है। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि क्रैश कमिंग है या कैश कमिंग है। जाहिर सी बात है, हमने इतनी ढेर सारी बातें करी, हम लोगों की जितने भी लेटेस्ट ट्वीटे हैं उससे देख के आइडिया तो लग जा रहा होगा आपको। फिर भी अगर हाँ, आप बात करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिख रहा है हर तरफ से, हर एंगल से। बहुत ही ज्यादा अच्छा, जिसको कहते हैं ना, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा। अब अगर देखें तो सबसे ज्यादा इज्जत मैंने आज तक करी है अगर इस कारपोरेट जगत में, तो मैंने दीपक पारेख की करता था। जब से स्टॉक मार्केट में आया शुरू से उस आदमी से ऊपर मैंने आज तक किसी को इज्जत दी नहीं, नॉट इवन अम्बानीज एंड वगैरह। अ, इनके सिर्फ इनके इन्वॉल्वमेंट से मैंने बहुत मोटा पैसा सत्यम में कमाया था। जब सत्यम क्रैश हुआ, 5-6 रुपया, 1-2 रुपया का लो तक लग गया था, एंड ऑलमोस्ट 15-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो सरकार ने जब कमेटी बैठाई थी कि इसको संभालो इस मैटर को, और मनमोहन सिंह की सरकार थी, नई नई बन के आई थी 2009 में, तो दीपक पारेख को कमेटी का हेड बनाया गया था। यू कांट बिलीव, मैंने बोला सब बेचो, सब कुछ बेच दो, बर्तन बेच दो, चप्पल बेच दो, सत्यम उठा लो। बिलीव में 20 रुपए का स्टॉक उठाया था हम लोगों ने, 100 रुपए में बेचा 1 साल में। इससे बड़ा रिटर्न तो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया होगा। खाली एक इंसान को देख रहे थे कि ये आदमी बैठा ना तो कमाल करेगा, और उसने उठाया और टेक महिंद्रा को उठा के थमा दिया 100 रुपया में। तो ये चीज क्या है ना कि उस आदमी के अभी कुछ टाइम पहले के एक ट्वीट, उनका स्क्रीनशॉट था टीवी का, और वो मैंने शेयर किया था। वो उस इंसान कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज्यादा इंडिया पे ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, कभी हुआ नहीं। जबकि हमने इससे पहले एक चार्ट पे शेयर किया था कि 4 या 5 साल में हमने 600% की रैली की है। बट वो एक, कहते हैं ना कि उस रैली को मैं जस्टिफाई नहीं करता इकोनॉमी से, क्योंकि कई कई बार क्या होता है ना कि हमारी ग्रोथ से कहीं ज्यादा स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकती है, और हमारी डी ग्रोथ से कहीं ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत से अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। बट हाँ, हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है हम लोग। बहुत ज्यादा उम्मीद ऐसी लगती है कि शायद यह 8 साल से कम की रैली नहीं है, अगले 8 साल से कम की नहीं है। ठीक है। हाँ, मुझे मैं भी मतलब हाँ जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ हो गई हैं। जैसे कि एक साथ बैंक का एनपीए एकदम खत्म हो गया है। अगर मान लो यही चीज, अगर यही सिचुएशन 4 साल या 5 साल पहले होती कि बैंक एनपीए में फंसे हैं, तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आज की डेट ये में क्या है, बैंक के एनपीए खत्म हो गए हैं, और इंफ्रा लेवल पे जो काम हुआ है, जो ये वेस्ट कॉरिडोर और ईस्ट कॉरिडोर बने हैं रेलवे के, कि सिर्फ 12 से 13 घंटे में दिल्ली से मालगाड़ी जो है 12 से 13 घंटे में बंबई और कोलकाता पहुंच सकती हैं। मतलब ये इंफ्रा आज से अगर 5 साल पहले ये सिचुएशन होती तो शायद हम उसको डिलीवर भी ना कर पाते। तो आज की डेट में जो ये बंबई एक्सप्रेस वे जो बन गया है, मतलब ट्रक से माल आप 15 घंटे में दिल्ली से बंबई पहुंचा सकते हो। मतलब हर लेवल पे, बैंक के लेवल पे, इंफ्रा के लेवल पे, और जो चाइना में जो प्रॉब्लम आ रही है उस लेवल पे की जो काम इंडिया में आ सकता है। मतलब हर लेवल पे चीजें ऐसे लग रहा है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव इंडिया के लिए ही हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। पिछले 12 साल में, कोरोना के पेंडेमिक आने से पिछले 12 साल में, हम सब जो है क्राइसिस में थे, दुनिया भर का स्ट्रगल कर रहे थे, चीजें सब चेंज हो रही थी, और ये सब आज का दिन नहीं है। जो एनपीए की आप बात कर रहे हैं, इसकी क्लीनिंग 2013 से शुरू हुई थी, जब रघुराम राजन आए थे। तो ये सब प्रोसेस काफी लंबे से चल रहा था, और ये सब आपको 12 साल की मेहनत का नतीजा है, जो अब आप इंडिया जो नया उभर के आया है। और ये सारी जो चीजें होती हैं, ये ना स्मार्ट मनी को बहुत अच्छे से दिखती है। उसको ये पता था पेंडेमिक से पहले कि हमारी मेहनत क्या चल रही है, हम खाए कहाँ पे। अब उसको यही होता है कि उसको इतना दूर का दिख रहा था, तो अब उनको रिएक्ट करना था
जैसे कल एक छोटी सी घटना हुई कि यूरोप की पाइपलाइन का प्रॉब्लम हो गया, तो ये हो गया और एकदम से 32,000 से डाउ जोन गिर गया 800 पॉइंट। ओके, ये सब ना टेम्परेरी चीजें, ये फंडामेंटल नहीं चेंज करती किसी की दाल रोटी नहीं चेंज करती। जैसे आप हो, नॉर्मल लाइफ चल रही है, बाइक से जा रहे थे, अचानक फिसल के गिर गए, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, जाओ मरहम पट्टी करो, कल से काम धंधे पे फिर लगो। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो पेंडेमिक आया था ना, उसको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था स्मार्ट मनी ने, समझ लिया था विजनरी लोगों ने कि आगे क्या होना है। हम उसने पीछे 12 साल दिख रहा था, और वो एक्चुअली ने पीछे बहुत सेलिंग चल रही थी। आपको खाली निफ्टी दिखता था कि वो 12,000 पे है, रियलिटी में 80% मार्केट वाज ऑलरेडी क्रैश्ड, और वो 2018 से था। तो कई चार्ट हैं जिनको आपको देखना चाहिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हम पहले से ही ठंडा करके रखे थे, वो क्लाइमेक्स था सिर्फ, जिसको एक बहाना मिला। और यही सब चीजें हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी होती है जो कोट टाई लगा के ना बेवकूफ बनाने चले आते हैं उसी में, जहां पर कुछ सोचना कुछ था और सोचना कुछ और शुरू करते हैं उल्टा। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, अभी तो जस्ट शुरू हुई है, 2020 से काउंटडाउन चल रहा है, 2 साल, 2020, 21, 22 के आप 8वें महीने में बैठे हैं। 2030 तक का तो माहौल लगता है, क्योंकि जब इतनी मेहनत के बाद हम उठे हैं तो इतना जल्दी रुकेंगे भी नहीं। तो बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर मनोज। हाँ, हेलो विपिन सर, हेलो एवरीवन। मैं एक्चुअल में एक यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म में काम करता हूँ पिछले 20 साल से। तो बस एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना था टीएलटी के बेसिस पे। मैं बॉन्डेस में हूँ, तो टीएलटी जैसा आपने बोला भी था कि इट वेंट अप टिल 166 समथिंग 2001 तक में गया था 21 में, और अभी इट्स ट्रेडिंग अराउंड 109 110 समथिंग। ठीक है, तो मेन जो इसमें है कि ये 120 से क्रैश हुआ लास्ट 15-20 डेज में, तो इट्स ऑलरेडी प्राइसिंग इन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइस राइज, रेट हाइक। तो अराउंड 2.25 to 2.5 का रेट हाइक ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और इसका पिछला बॉटम था 105 के आसपास, या 105 104, तो ऑलमोस्ट वहाँ तक जाके रिटेस्ट करेगा। और इसका जो क्या बोलते हैं इम्पैक्ट है वो यूएस मॉर्गेज पे है। तो यूएस मॉर्गेज रेट जो है वो 20 to 30 ईयर ट्रेजरी के बेसिस पे पेग होती है, तो वहाँ पे टीएलटी का इम्पैक्ट आता है। तो लाइक आपका व्यू है इट विल गो पॉजिटिव, मुझे भी ऐसा लगता है कि इट्स ओवरसोल्ड, लेकिन मेरे ख्याल से दैट विल बी द नंबर विच वी शुड ट्रैक, क्योंकि अगर वहाँ से वो डाउनफॉल में जाता है तो यूएस मॉर्गेज रेट विल बी टेरिबली हिट, एंड उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ सकता है, होपफुली ना पड़े, बट दैट्स द व्यू आई वांटेड टू गिव। थैंक यू मनोज जी। मैंने जो चार्ट शेयर किया था ना, वो एक्चुअली उसका डॉलर में प्राइस में नहीं था। आपने अगर आप देख लें तो उसका जो मूवमेंट है वो बहुत अलग ही मूवमेंट आपको दिखेगा। उसमें एक जो टॉप लगा है वो 2020 अप्रैल में लगा है, अच्छा। और ये जो बॉटम है, हाँ, बट मैंने जब उसको कैलकुलेट किया है तो उसमें मैंने पूरा का पूरा डॉलर का डिप्रेशिएशन एडजस्ट कर दिया है पिछले सन 2000 से लेके अब तक का। तो वो जो आपको पिक्चर दिख रही होगी वो उल्टी दिख रही होगी, उसमें 2011 में जो लो लगा था हमने उस लो को टेस्ट किया है। तो एक्चुअली बॉन्ड बायर को ये माल बहुत फोकट में मिल रहा है, आपको हाँ जो हाँ भी प्राइस दिख रहा है उससे फोकट में मिल रहा है। तो चीजें पलटने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमेशा हाई होती हैं। हाँ, दैट और आई एग्री बाकी विथ तो यू। हाँ, बाकी क्योंकि ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी से बड़ा मैनेजर, मार्केट का मैनेजर इस दुनिया में कोई है नहीं, हाँ हाँ, इससे दैट बड़ा आई एग्री। खिलाड़ी कोई नहीं ऑलमोस्ट पूरी 40% ऑफ द वर्ल्ड लिक्विड मार्केट इज यूएस ट्रेजरी। या तो हाँ ये इनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं, इनसे बड़ा कोई गवर्नर नहीं है। ये सब कुछ खेलते हैं और किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। अगर इनको माल खरीदने पे आ गए तो न जाने कितनी अफवाहें फैलाएंगे। अगर आज देखो तो यूएस मार्केट उठ नहीं रहा, क्या पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूएस ट्रेजरी इतना भूखा हुआ है, इतना माल खरीदने के लिए भूखा हुआ है कि वो कुछ भी होता है तो इतना आके इस तरह का डिप्रेसिंग बातें करना, इतना डराने वाली बातें करना, मुझे तो लग रहा है यूएस ट्रेजरी माल खरीद रहा है फिलहाल। नहीं,
जो नहीं, चीजें खरीद तो नहीं जैसे रहा दिख है, रही लाइक खरीद तो नहीं रहा है, मेरे पास नंबर्स हैं उसके, मैं खरीद तो नहीं वो रहा है, लेकिन हाँ एक चीज बोल सकता हूँ, आपके उनका व्यू से मैं अग्री डिस्क्लोजर करता हमेशा हूँ। बहुत डिले है, उनका हाँ, आपके डिस्क्लोजर इससे बहुत एग्री डिले है। करता हूँ, क्योंकि अनुज ये जी लोग एक ऑलरेडी ऑलरेडी 3% प्राइस इन है, मतलब 2.25 तो अभी प्राइस इन है, और जिस हिसाब से जा रहा है मुझे लग रहा है ये और 2-3% नीचे जाएगा टीएलटी, तो ऑलमोस्ट लाइक 3% प्राइस इन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब ओवर रिएक्शन। मनोज जी जो विपिन जी ने डाला है वो मैं नेक्स्ट वो नहीं देखा एक्चुअल में, नहीं वो भी देखता जो हूँ। बॉन्ड्स के हाँ, अंदर जो तेजी का बात कर रहे हैं वो अगले 2-3 क्वार्टर की बात कर रहे हैं, इमीडिएट का नहीं है उसमें। अच्छा, यानी बेसिकली उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो बॉन्ड्स है आज की रेट में बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, जो हाँ, एंट्री पॉइंट दैट आई रहेगी, एग्री। जो एंट्री पॉइंट मिलेगी बॉन्ड वालों को, जो जो बॉन्ड में पैसा डालते हैं, दे आर गेटिंग एट अ वेरी चीप रेट, वेरी सिंपल। हाँ, हाँ, वो मैंने वजह से बोला ना कि ऑलमोस्ट 3%, एंड ट्रेजरी के लिए 3% बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ठीक है, मैं चेक करता हूँ चार्ट, मैं एक्चुअल में टीएलटी का यूएस डॉलर चार्ट देख रहा था। नहीं नहीं, अभी वो जो उन्होंने डाला है वो अलग है, फिर वापस देखिएगा फिर हाँ, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर अमित। हाँ जी, can you hear me? यस यस प्लीज। Okay, I hope there's no echo because मैं अपनी गाड़ी में हूँ, I had to stop my car. नो नो नो, इट्स वेरी क्लियर। तो मेरा दो तीन just like maybe two major like sort of larger questions that I had, जो मैंने अपने विपिन भाई के ट्विटर का जो उनका वो था उसमें डाले थे मैंने. I just elaborated on them, but the fundamental question actually kind of takes on what कमल जी जो थे पीछे उन्होंने जो बोला था about you know what, how people actually I realize that how people end up losing money when they're overexposed to a certain sort of section of their portfolio allocation. My father-in-law lost his house in the 2000 crash. My father as well lost a lot of money, but मतलब वहां से मुझे एक सीख मिली कि मतलब पहली बात तो कि ये नहीं करना चाहिए कि आप अपना सारा पूंजी जो है, पैसा जो है, सिर्फ डबल हो जाए उसके चक्कर में, बिकॉज आपको इंडिकेशन कुछ मिल रहा है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे एफएन हो, वो बात एक ही है, डजंट मैटर, चाहे गोल्ड हो चाहे कोई भी एक सेक्टर हो जो आपको लग रहा है कि हाँ वो डबल हो जाएगा एक साल में, या मेरा पैसा डबल कर देगा या तिगना कर देगा या चौगुना कर देगा या पांच गुना कर देगा. एलोकेशन मैटर्स, मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मैटर्स. तो मेरा फर्स्ट सवाल एक्चुअली वहीं पे था, जो मैंने ट्विटर पे डाला था कि टिपिकली सो व्हाट वी डू इज दैट कि हम गोल्ड में डाल देते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा रियल एस्टेट में डाल देंगे, थोड़ा इक्विटी में डाल देंगे, थोड़ा सा सेफ मनी रखेंगे. टिप नॉर्मली गोल्ड फॉर एग्जांपल हैज प्रूवन टू बी अ वेरी गुड हेज नॉर्मली so far traditionally. I still don't know, मतलब कि अभी because we don't know whether we're in a bear market or not. मतलब it's a questionable thing कि bear market है भी कि नहीं है, वो भी एक अलग बात है. But so what I did, for example, like मेरा gold portfolio is, let's say, and it's only for hedging. मेरा gold portfolio hedging के लिए होता है थोड़ा बहुत कि suppose 3% था until beginning of 2021. Around August, September, October, I felt कि चलो I think थोड़ा सा अभी मार्केट, इक्विटी मार्केट सैचुरेट हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन अब वो डाउनवर्ड ही गया एक तरह से. इट्स नॉट परफॉर्मिंग एज वेल. सो एक फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या लाइक हैज गोल्ड लॉस्ट, इज गोल्ड लूजिंग, सॉरी, इज गोल्ड लूजिंग इट्स ट्रेडिशनल hedging quotient, one, और अभी लाइक कि नहीं, एक्चुअली बेयर मार्केट है ही नहीं. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज कि सेम वे उसमें रियल एस्टेट भी आता है. रियल एस्टेट has always typically been a very good sort of long term hedge. Not gold is still more liquid in compared to real estate, but so real estate is very मेरा क्वेश्चन भी मैंने डाला था कि it's difficult to manage, illiquid है, लेकिन रिटर्न्स उसमें लॉन्ग टर्म में बड़े मिलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो दैट यू आर बिल्डिंग,
Are these hedging strategies? Are these hedging? Sorry, not strategies. Are these hedging tools losing their relevance, or is it just like sort of क्या कहते हैं, like a blip? Because maybe we're not. I mean, I know mostly the answer तो वही आएगा कि यहाँ we are not in a bear market. लेकिन कहीं ना कहीं एक एक है एक I don't know why I feel that I still feel that gold should have responded better. Like silver responded brilliantly, but gold didn't, for example, right? So is gold losing its relevance versus other, for example, bullion commodities? One. Second question was कि जो housing market का जो यूएस में जिस तरह से एंड आई नो मैंने क्वेश्चन जो ट्वीट में फ्रेज किया था वो अलग था. At that point of time it was give me a second, specific to Himja, because she had tweeted something about the housing market change, cooling off kind of effect. Lekin my broader question is that ki why it's considered the housing market numbers are considered so important. I think everybody knows that. जो भी जानता है मतलब कि बेसिक कैलकुलेशंस तो सब कर लेते हैं. एक तो ये है कि यूएस मार्केट में वन after 2008 what happened, the housing market calculations became more and more important because of all that happened. Second, I understand the US housing, the western housing markets from the sense that कि वहाँ पे actually जो कैलकुलेशंस होते हैं हाउसिंग मार्केट के वो रेंटल वैल्यू पे होते हैं. एक्चुअली वो हाउस प्राइसेस पे नहीं होते हैं. रेंटल वैल्यू उनके लिए डेटा कलेक्ट करना इजी होता है बिकॉज दे हैव चार्टर्ड सर्वेयर्स फॉर ऑल दैट स्टफ. उनका एक्चुअल वैल्यूएशन प्रोसेस जो होता है, वैल्यूएशन का जो उनका पूरा प्रोसेस है, पूरा फ्रेमवर्क है, इज बेस्ड ऑन रेंटल वैल्यू. हमारे यहाँ नहीं होता ये सब, बट वी डू हैव अ बैकवर्ड कैलकुलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग कि हम देखते हैं कि प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं तो उसके हिसाब से रेंटल्स भी बढ़ रहे हैं. Why don't we? I've never seen a metric in India of calculating rental values going up across states and urban, semi-urban, rural, semi-rural, whatever. I've never seen a metric where it's considered important enough to consider while जब हम हमको समझना this is a basic knowledge कि रेंटल वैल्यू, रेंट जो आप घर का रेंट भरते हैं, नॉट मोस्ट पीपल आर होम ओनर्स. अगर होम ओनर्स भी हैं तो इम्प्यूटेड वैल्यू तो होती ही है ना. अगर आप बट स्टिल आप होम ओनर नहीं है ज्यादा करके 80% आर नॉट होम ओनर्स, और आई थिंक द नंबर इज मोर. जब इफ मोस्ट पीपल आर रेंटिंग तो वो एंड व्हेन द रेंट ऑफ योर हाउस constitutes more than twice of your regular expense, why does that not constitute as a good as a like a needed metric for the Indian economy in terms of कि कहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, all that kind of stuff. हम लोग इन्फ्लेशन, महंगाई जो है उसमें हम लोग रेंटल्स इंक्लूड ही नहीं करते हैं. So that's the second question. Third was on that which is not related, was in the common sense and intuition wala which Vipin Bhai knows. That's it. अमित जी, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. जब आपने बोला गोल्ड, तो गोल्ड में मैंने कई बार इस चीज़ को ट्वीट किया था कि 2011 का हाई है $19-20 ऑलमोस्ट. जब उस प्राइस को हमने ब्रेकआउट किया बिफोर द यूक्रेन रशिया वार, फिर हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं करते, गिर जाते हैं. और उस 12 साल के प्राइस, जो भी 12 साल का हाई है वो ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर ब्रेकआउट करके हम गिर जाते हैं. चलो मान लिया कि आपको ऊपर जाना था, आपने
ट्रैप किया ट्रेडिंग का। जस्ट वन स्मॉल इंटरवेंशन, एक छोटा, हाँ आई एम रियली सॉरी। मैं ब्रॉडर टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा, ब्रॉडली आई कैन सी, एवरीवन कैन सी दैट गोल्ड इज गोइंग डाउन। अगर आप रेड स्टैंड की बात कर रहे हो तो वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि टिपिकली ट्रेडिशनली गोल्ड जैसे रिसेशन में रिस्पॉन्ड करता है, इस बार नहीं कर रहा है क्योंकि रिसेशन नहीं है। हाँ एग्जैक्ट। तो आप फिर वही तो समझा रहा था आपको, मैंने यही समझाया कि पहले मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर ट्रैप किया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स जनरेट हुई, यूके रशिया वार, यूक्रेन का रशिया का वार हुआ, उसके बाद वहां से सारी चीजें एकदम से दिखाई गई कि कुछ अलग होने जा रही, बहुत कुछ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरह से हालात होंगे, दो देश आपस में लड़ेंगे जिनके पास रॉ मटेरियल का, हमारी जरूरतों का दुनिया भर का कंट्रोल है, उनसे पूरी होती है, पूरा का पूरा बहुत बड़ा सिस्टम है, अगर वो सब ब्लॉक हो रहा है तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो रिस्क का अनसर्टेनिटी आ गई, चीजें बदलेंगी। जैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी वहां पर गोल्ड एप्रिशिएट करेगा, सिर्फ डर के नाम पे। अदरवाइज गोल्ड का कोई अप्रिसिएशन कभी नहीं होता, वो सिर्फ करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होती रहती है, गोल्ड आपको महंगा दिखता है, सिर्फ इन्फ्लेशन का एक हेज है। लेकिन कभी अगर आप देखो तो ठीक से हेज भी नहीं है, उतना हेज नहीं कर रहा है जिस तरह से चीजें चल रही। खाली बुल रन में आपको हेज कर देता है, अदरवाइज फिर साइडवेज हो जाता है। तो अभी जो हुआ, जो इस तरह का करेक्टर हुआ था कि इतना बड़ा फियर आया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आप और ये दो आपने कहा बुल रन में हेज कर देता है, बेयर रन में हेज कर देता है। जब अपने बुल रन में गोल्ड होता है तो आपको एक बेटर हेज देता है इन्फ्लेशन का, अच्छा, जब क्योंकि गोल्ड वो बुल, अच्छा एप्रिशिएट, हाँ गोल्ड बुल में होता है तो। अदरवाइज फिर जब फ्लैट होता है तो, या इक्विटी का बुल मार्केट चल रहा होता है, फ्लैट हो जाता है और वहां पर आपको डाइल्यूट करा देता है। पिछला भी हुआ था, 2011 में हाई लगा और 2015 तक गिरता रहा, 35,000 का गोल्ड 25,000, कितना बड़ा गिरावट है यार, 10,000 रुपया 3 साल तक 4 साल तक गिरता ही रहा गोल्ड। अदरवाइज ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये आज की है, ऐसे पहले ना 1980 में भी बहुत बड़ा मूव आया था, उसमें बहुत कुछ चीजें जनरेट ऐसी हुई थी कि गोल्ड हद से ज्यादा भाग गया, मतलब एक सिस्टम के ऊपर निकल गया, एक्सेप्ट बोलते हैं इसके वेलोसिटी से रॉकेट हो गया। उसके बाद 20 साल तक वो सिर्फ डाउन ट्रेंड रहा, साइडवेज रहा, डाउन ट्रेंड रहा, साइडवेज रहा, डाउन ट्रेंड रहा। फिर उसके बाद उसका एप्रिसिएशन दोबारा स्टार्ट हुआ जब वापस प्रिंटिंग पे फोकस हुआ, करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ। एनीवे, अभी की स्थिति सोचिए कि जब एक तरफ कोई रिसेशन की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, रिस्क की बात कर रहा है, तो गोल्ड जब दोबारा स्पाइक मारता है 2000 के ऊपर, फिर नीचे क्यों आता है, किस भाव से? मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, 12 साल पुराना भाव, वो तो बेस बनना चाहिए था, पिछली बार नहीं बना, इस बार तो बनो। वो छोड़िए, $1680 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो सब चल रहा है वो सब टेम्परेरी है, जिस पर पैनिक है। दो तरह की न्यूज़ें होती है, एक न्यूज़ होती है ठोस कि भाई ये कांड हो गया, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, आगे तो पूरा रिकवर करना है, मतलब एक मकान है गिर गया। बट दूसरा होता है भूकंप टाइप का, तो भूकंप है, सब घर के बाहर निकल गए, सब काम धंधा छोड़ के, और लगा कि अब तो खत्म हो गई दुनिया। बट बाद में क्या होता है, सब नॉर्मल हो जाता है। जितना छोटा मोटा जो डैमेज होता है जहां पर भी है वो हुआ, कभी बहुत बुरा हादसा भी होता है, भूकंप का मजाक नहीं उड़ाने बैठे हैं यहाँ। लेकिन इन जनरल जितने भी 80% 90% भूकंप है, उनसे अगर आप को रिलेट करिए तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई फंडामेंटल डैमेज ऐसा नहीं हुआ, मकान गिरा नहीं, लेकिन डर ऐसा हुआ कि सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, सब मर जाएंगे। तो वैसे स्टॉक मार्केट छोटे छोटे इन चीजों पे काम करता रहता है। तो आपका गोल्ड, मेरे ख्याल से जिस तरह से करेंसी का इनबैलेंस है उसके बावजूद भी अगर गोल्ड डॉलर में इस तरह से नहीं चल पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम, हो सकता है कि अगले 4-5 साल, या जब तक हम इक्विटी में बुल मार्केट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 2030 तक हमें ये अप डाउन करती रहेगी, 2-4 महीने के बियर साइकिल छोटी छोटी आती रहेगी, लेकिन एक बड़ी साइकिल हम 2030 तक की ग्रोथ देखते हैं, जो फंडामेंटली भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चार्ट से कैलकुलेशन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आपने कहा वो यूएस का डेटा और उनका हाउसिंग डेटा, मैंने कहा सुनो, इसकी ना मैं असली हिंदी बताता हूँ। ये अमेरिका ना हमें तमाम चीजें, नई नई चीजें सिखाता है। इनको करना है अप एंड डाउन, दुनिया को करना है कंट्रोल, कहाँ से करें?
किस चीज से करें? वो एप्पल है, परफॉर्म कर रही है, 3 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, तब उसका सेल्स आएगा, फिर उसका डेटा देखेंगे। करें कैसे? मार्केट को अप डाउन करना है, क्या करें? चीजें इंट्रोड्यूस करो, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करो, उनको उनकी वैल्यू जनरेट करो। ये डेटा वो डेटा पूरा पका रखा है यार, हर हफ्ते सुबह से लेकर शाम तक ये डेटा वो डेटा, एक ही चीज के लिए बार बार मीटिंग करना, सब हाइपर क्रिएट करना जाता है। ये सब जोकर वाला काम है, इससे कुछ नहीं बदलता है, कुछ भी इससे बदलता नहीं। ये सब हमेशा एक ऊपर नीचे, क्योंकि पूरी दुनिया को चलाता है वो। अभी यही थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हमारे अमेरिकन कंपनी के कोई एम्प्लॉय थे, उन्होंने भी इस चीज को आपके सामने आकर बोला कि पूरी दुनिया को यूएस ट्रेजरी चलाता है। तो सोचिए ना कि उसको आप लाल हरी कैंडल बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। वो ऑपरेटर है पूरी दुनिया का। तो डेटा पॉइंट्स की वैल्यू बनाना कि नहीं ये होगा, हम जरा सा उनका कभी देखो 0.55 लास्ट डेटा था, 0.60 की एक्सपेक्टेशन थी, और दोनों के बीच में आ गया और मार्केट गिर गया 400 पॉइंट। अरे क्या बकवास है यार, फालतू का बात है। उनको टाइम पास करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, उसका वेटेज देना है। और अगर आपने उनको बोल दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम बकवास कर रहे हो, तो उसको प्रूफ कर देंगे पूरा 4 दिन बैठ के ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे डेटा ना कोई फायदा नहीं है देखने का। ब्रॉडर लेवल पे डेटा देखोगे तभी काम करेगा, जैसे हम लोगों ने कहा ब्रॉडर लेवल पे मार्केट देखो। समझ में आया आपको? नहीं, मैं देखिए आपके ब्रॉडर पॉइंट से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें फिर ये बात तो ये भी बोली जा सकती है कि फिर नो डेटा मैटर्स, फिर नहीं, हमें डेटा किसी मैटर चीज का करता डेटा है, नहीं चाहिए। डेटा मैटर करता है। आप वेटेज क्यों दे रहे हो? हर हफ्ते क्यों दे रहे हो हाउसिंग का डेटा? क्या फायदा हुआ देखने का? हर हफ्ते डेटा कलेक्ट करो, कभी मेजर चेंज हो नहीं नहीं तब वो नहीं समझो आप। नहीं, इट डजंट मैटर कि वो आपको हर हफ्ते दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। पॉइंट मैटर्स कि आप कैसे उसको आप चार्ट कैसे कर रहे हो, एज इन लाइक आप चार्ट आपकी मर्जी है ना। आप वीकली चार्ट कर सकते हो, आप मंथली चार्ट कर सकते हो, आप उसको एनालाइज नॉट चार्ट लाइक एनालाइज कर सकते हो। देखो आप साहब, द आप पॉइंट समझो, एक उनके उनके यहाँ के जो विपिन फंड है ना, बिलियन और ट्रिलियंस में घूमते हैं। वो ना आज थोड़ा सा भी किसी डेटा पे एक रिएक्ट कर दिया तो ऐसा कर दिया, उनके बिलियंस एक्चुअली कमाते हैं पैसा। विपिन विपिन उनके जी लिए डेटा मेरा मैटर करता है। मेरा मेरा सवाल एक्चुअली ये था। हम्म, थोड़ा सा एक्चुअली मेरा यू नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। माय क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट दैट कि दैट समथिंग एक मेट्रिक है, हाउसिंग मेट्रिक, बहुत वो इंपॉर्टेंट मैं मेट्रिक समझ गया, वो समझ गया। वो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। यूएस ऐसे कैलकुलेट करता है, इंडिया में ऐसा नहीं करता है। वहां पर वो रेंटल से देखते हैं, वो थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। यहाँ पर नहीं, हाउसिंग का प्राइस देखते हैं। बट इन चीजों का करेंगे क्या? ये रिलेवेंट है कहाँ पे हमारे लिए? वो बिकॉज कुछ आपको भी वो पॉलिसी यूज इन्फ्लेशन करता है, हम कुछ। वो आपको इन्फ्लेशन का इंडिकेशन देता है आपको। इन्फ्लेशन में बहुत से डेटा पॉइंट है। हाँ ठीक है, मतलब आई एम सेइंग कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स is missing in the Indian inflation index. In a sense, I'm saying that in उसमें the Indian, उसमें उसमें अपने जो इंडियन का जो डेटा है ना, उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। उसमें तो मेथाइल का भी है वैल्यू, विक्स वेपोरअप का भी डाल दिया उन्होंने। क्या क्या बकवास डाला हुआ उन्होंने, पता नहीं क्या क्या चीज डाला हुआ। करना क्या है उसका? कुछ नहीं फायदा उस डेटा को देखने का, कोई फायदा नहीं होता। नहीं चलिए आप अलग बात बोल रहे हैं। आप एक्चुअली मैं जो बात बोल आप रहा हूँ ना, जब आप डीप में जाएंगे ना, मैक्रो में, तो फिर मैं मैक्रो की बात करूंगा ना। फिर जाकर देखो ना कि इनका जो डेटा कैलकुलेट होता है वो किस चीज के बिहाफ पे कैलकुलेट होता है, उसमें विपिन किस भाई किस चीज को वैल्यू दी है। ये बात तो अपने आप अपने यूएस को ही बोल सकते हैं। क्या पॉइंट है ये डेटा पॉइंट उठाने का? क्या पॉइंट है कोई और डेटा पॉइंट उठाने का? जब हमको पता है डायरेक्शन, हमको पता है, तो फिर पॉइंट क्या है? हमको नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन डेटा बात पॉइंट की नहीं, मदद। मुझे बात ये नहीं समझ में आती। जैसे ये डेटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो डेटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये इनकी मर्जी है ना, इस पे हमारा डिस्कस करके नहीं नहीं, हमको मिलेगा मैं क्या? मैं 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 मेथड ऑफ कैलकुलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सच एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक, मैं आप ट्वीट भी मेरा देख लेना। मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई इज सच एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन मिसिंग फ्रॉम द इंडियन इक्वेशन। मेरा क्वेश्चन ये था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ये इन्फ्लेशन का। अच्छा, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन मैंने विपिन भाई आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन मैटर्स और नॉट? आप ये नहीं कहते इन्फ्लेशन डजंट मैटर, इट मैटर्स, राइट? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एज a metric for the general broader market, it matters, right? अब उसके अंदर हम देख सब्जी के भाव देख लेते हैं, हमारे जो इमीडिएटली जो हमको पॉलिटिकली अफेक्ट करता है हम वो देख लेते हैं। जो इकोनॉमिकली लार्जर बेस पे अफेक्ट करता है, आप कहीं भी देख लो, आप मेट्रिक ऑफ आप रेशियो ऑफ रेंट पेड वर्सेस ग्रोसरी एक्सपेंस, मिनिमम 2:1 मिलेगा आपको, मिनिमम 2:1, एटलीस्ट 1.5:1। मतलब 2 से शुरू होता है कि मतलब अगर आपका घर का खर्चा 10,000 है तो आपका रेंट 4 गुना होगा उसका। इतना इंपॉर्टेंट मेट्रिक आप मिस कर रहे हो। बिल्कुल सही है, इसके लिए डिनाई नहीं कर रहे, बट अब यूएस में इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और आपकी शिकायत है कि इंडिया में क्यों नहीं करते? नहीं, मेरी शिकायत नहीं है। आपको शिकायत कहाँ से? शिकायत करने को कुछ होता नहीं है यहाँ पे कहीं भी कोई कुछ नहीं होता है, शिकायत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेट्रिक अगर इंक्लूड नहीं किया जाए तो थोड़ा सा आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग का भी कैलकुलेशन, किसी का भी मार्केट कैलकुलेशन, कोई भी अगर बाहर का भी पैसे लेके आता है, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, अगर हमको ट्रू इन्फ्लेशनरी हमको कोशेंट या स्केल हमको नहीं पता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ वहां पर। अच्छा, मैंने यूएस एग्जांपल क्यों दिया? वेस्ट का एग्जांपल है ये। एक्चुअली मैं स्टडी कर चुका हूँ वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट, वहाँ का पूरा एक सिस्टमाइज्ड है। अच्छा, सिस्टमाइज्ड होने में कुछ गलत नहीं है, राइट? वी ऑल अंडरस्टैंड दैट हम भी सिस्टमाइज हो रहे हैं अभी, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगले 10-15 साल में सिमिलर सिस्टम आ जाएगा यहाँ पर मेरे इंडिया ख्याल में। से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक डिफरेंस हो सकता है, वी हैव टू सी कि कोरिया पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी मेट्रिक लगाते हैं क्या? मेरे ख्याल से आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट सेइंग विद श्योरिटी, जस्ट आई एम थिंकिंग। तो चाइना में है, चाइना में फॉर एग्जांपल वो मेट्रिक है, वो चाइना में मेट्रिक है। है। They have a very clear metric. They actually calculate. They have their own method. But maybe so this also makes a difference, no? What kind of contribution the construction industry has having on the GDP? That is also one so important. there you go. Exactly, it's very well said. So again, so what happens is that what inflation has got nothing to do with real estate companies. No, but it's passing on to the consumers. No, it's passing on to the consumers. No, but it directly does not. That's the point. Now, so what happens in the West is that they in the West, because वो developed and quote unquote develop whatever, उनका develop का system क्या है कि वो लोग का प्रॉपर्टी वैल्यू वो लोग इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऑफ रेंटल वैल्यू। ओके, इंडिया में वो सिस्टम नहीं है। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। हम लोग करते हैं कि हमारा प्राइस डिस्कवरी होता है बेस्ड ऑन कि कौन खरीदने को तैयार है किस भाव में, और उसके हिसाब से रेंटल वैल्यू मोर और लेस सॉर्ट ऑफ डिसाइड होता है कि मतलब आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली 1 करोड़ की, आपको कम से कम 5 लाख रेंट चाहिए साल का, बस आपका काम हो गया। उधर कोई लेने को आ गया, वो कल को 6 लाख हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, उसमें प्राइस डिस्कवरी वाला सिस्टम है यहाँ पे। इन द वेस्ट व्हाट हैपेंस इज दैट कि रेंटल वैल्यू इज द बेस। रेंटल वैल्यू को कंसीडर डिस्काउंटेड कैश के बेसिस पे प्राइस वैल्यूएशन होता है। चार्टर्ड सर्वेयर्स है वहां पे उसके लिए, ओके, which is why the entire system of this entire thing of housing market is so important for them because it directly equates, मतलब उनके पास में नंबर्स हैं, वो नंबर्स वो बॉटम से बेस से निकाल रहे हैं। बेस क्या है? रेंटल वैल्यू। रेंटल मतलब इन्फ्लेशन, मतलब खर्चा, मतलब इन्फ्लेशन। Right, sir. Right. Got it. राइट। अब हमारे यहाँ वो हम, it's not like people don't rent houses here, we do, right? 80% इंडिया में 80% लोग रेंटल पे रह रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे रेंटल बढ़ता है उसका फैक्टर वो फैक्टर होता ही नहीं है इन्फ्लेशन में, बिकॉज अच्छा हाँ ये भी हो सकता है कि बिकॉज हाँ मतलब
कि यहाँ पर वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा नंबर्स नहीं है, कहाँ नंबर देखने मैं जाएंगे? अमित जी कहाँ एक पर मिनट विजय सर से इस पे उनकी राय लेना चाहूंगा। विजय सर। Amit ji, see, you raised points which are very self-evident. Okay, American data collection has evolved over time, and they're very good, in removing some data, putting in some data, relevant data, all that. Like they have something called used car sales. That data is there. They take of I think 2 to 7 year old car sales, and that they use it part of the inflation. We don't have that. So even our, as I think Vipin said about, all kinds of data are there, all kinds of items are there in our inflation calculation. You may, I don't know whether you are aware that at one time we used to do WPI inflation was considered as important for RBI. Now CPI is considered as important for RBI. So we're not good data collectors. First of all, there is no good data available in this country. Why I say with this confidence is I started my career as a data analyst. I was with a company called Indian Market Research Bureau, which is the number one and the largest market research firm in this country. I know how poor data collection happens. Okay, so I used to go to CMI, talk to people there. Those days, I'm talking the 80s. Nobody was interested in data. Nobody. So we have some data which, in my opinion, is faulty at various levels. However, we have to live with the data we have, and this is consistent. So we are comparing apples with apples. So we cannot compare apples with oranges, where US has got a very systematized way of collecting data. Here we have nothing like that. So we should compare with what we are comparing, what we have collected last month to last year to so on and so forth. So first thing is to try to wonder why we are not having that data efficiency, I would say, vis-a-vis US, I think is a little bit, it may not be in the topic, I would say. So that I think we should leave aside. Now, can we improve our data collection? Yes. Should we improve our data collection? Yes. Do we have what shall I say? Why should we improve our data collection? Nobody has that incentive to improve data collection. That is the sad part. All of us are living with data which is faulty, and we are going about our day-to-day lives. So everybody is happy. So unless some new organization comes and says, okay, here it is. I'm doing a panel, for instance. In IMRB, we used to do panel. So we knew, for instance, what people smoked or what people ate or what people drank across the metros. In fact, I had suggested this when I was in IMRB itself. I suggested it, that why can't we do financial data collection like this, inflation? I've suggested it to CNBC. Some of the people like Lata and all follow me, and I've talked to her on DM many times, but there is no response. So there has to be somebody who has go about doing this, and then for what use? Because this data cannot be sold. People are not going to buy that data. So at the end of the day, it is a question of, we are with faulty data. We cannot compare ourselves with what other countries are doing. There is nobody willing to invest in data because this data cannot be monetized in a big manner. So that's where it is. Thank you, Sanik sir. Amit, I'll just wind up because I also have to go now. So okay, fine. I take your point, Senik ji. My point was not, again, margin error is different from actually missing an entire element. वो अलग बात है, but चलिए, I'll come back to my larger point जो मेरा था, जो मैंने कमल जी के बात से भी उठाया था कि my larger point in my tweets also was कि portfolio diversification का जो है उस पे आप पैनलिस्ट का क्या कहना है कि गोल्ड में कितना लगाए, नॉट लगाए कि नहीं लगाए, बट क्या होना चाहिए एक्सपोजर हर जगह और कितना होना चाहिए, या फिर is gold irrelevant, is really irrelevant, or now is only equity relevant? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो ट्रेडिशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, जो इज दैट चेंजिंग नाउ? Sanik sir, would you please like to take this question, sir? Yeah. Regarding investor. Yeah, let me take like this. What is portfolio diversification
really. I mean, when you are 20, you would like to take greater risk. At my age, at 62, I would like to take less risk. So my portfolio will be obviously different from, let's say, somebody who is 20-year-old. So that is first thing we should realize, that it changes with one, age, second, with disposable income, that is, sorry, investable income. Let me not say disposable income, investable income. And third is in terms of your own choice. For instance, there are people who would love to put money in real estate because they believe it lucky for them, or land for that matter. There are people like Deepak Shenoy, who is still living in a rented house. Not that he can't afford his own house. So there are people like that also. So there are people like me or my dad who never had his own home, though he was he's a civil engineer. So it all depends on what your portfolio allocation. It also depends on your mindset actually. See, we can have portfolio theories. You know, my MBA in Bajaj, we had all kinds of theories. At the end of the day, you will have diversification in the way you are most comfortable with. Take the case, a classic case of this equity diversification. Let's take only equity diversification. Now, studies after studies have proven that optimal diversification should not be more than 8 stocks. So let's say add 10 stocks. Now, Warren Buffett has got 90% sitting in 10 stocks, or 80%, 85% sitting in 10 stocks. Then 48% sitting in one stock, Apple. Look at our mutual fund guys here. They have 50 stocks, 60 stocks, 70 stocks. So, but they're also successful. They're also getting money. So how can we say these guys who are having 70 stocks in their portfolio, these big mutual fund guys who come and talk about everything, are any worse off than Warren Buffett, who's got 90% of his money in, say, 20 stocks, or 85% of his money in just 10 stocks? So we really don't know. There's only an academic discussion as to what should our portfolio consist of. For instance, I love gold, okay? So I have created a portfolio called Ugly Duckling Portfolio. I had only equity in that Ugly Duckling portfolio for many months. In April, I said, okay, gold has fallen, so let me put money in gold and silver. Now it has turned out to be a bad move because these 3-4 months, prices of every equity has gone up, but gold and silver has not moved. In fact, it has come down. So I think it's finally, it has to be tailor-made. It cannot be ready-made. I do not believe ready-made portfolios can work. It has to be tailor-made. So that's my limited answer to your query. Appreciate, sir, very much. Thank you, everyone on the panel. Thank you so much. Thank you. Mr. RD, Mr. Rajit, sorry, first Mr. Rajit आए थे. Rajit ji. Sir, what's the discussion about currently? Is it around the portfolio diversification or something else? Mr. RD. Sir, can I go? You want to ask a question? Yes, please. Am I audible? Please. Yes, you're audible. Please. Thank you for conducting this space, and my humble request is please keep very little small. People drag on for small things very long. One amazing point that I got from Bipinji is a gold price. It is hinting towards no recession. And unfortunately, my allocation to gold is very high. So can I shift it to equal parts in Reliance, ITC, HDFC, Tata Investment Company and Bajaj Holding, taking them as an ETF bouquet? Is it possible for you to answer like this? आई थिंक कि इस तरह के सजेशन के लिए हम लोग कभी पेश नहीं करते हैं. हम लोगों का एक प्रोसेस ही हमेशा डिस्कशन का पॉइंट रहता है, या कहीं पर जैसे मिसकंसेप्शन की बातें हैं या एक प्रोसेस को लेके इस तरह से सजेशन देना वो किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सडनली कुछ भी प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होती है और गोल्ड ऊपर जाता है, इक्विटी मार्केट नीचे फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसे में हम जवाब नहीं दे सकते आपको. नहीं प्रभु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ.
रिस्क तो हाँ मेरा जी, ही है, बिल्कुल रिस्क बातों से आपका सहमत है। हूँ। तभी अ, ये जो गुबार है, ये ऐसा तो मैं नहीं है कि एक स्टॉक के बारे में। मेरे को लगता है रिलायंस अपने आप में एक खुद ईटीएफ है, आईटीसी एक ईटीएफ है, एचडीएफसी एक ईटीएफ है, टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ईटीएफ है, बजाज होल्डिंग भी ईटीएफ है। माथाफोड़ी बंद करके इक्वल पार्ट में डिवाइड करके गोल्ड से आउट हो जावे ना। हाँ, अगर आप पूरी तरह से गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने चुने हुए पसंदीदा स्टॉकों में, तो वो फेवरेबल लगता है, क्योंकि अभी तो गोल्ड में यही है कि हर बार ज़रा-सा भी नॉर्मल सिचुएशन होती है तो बहुत तेज़ सेलिंग हो रही है, तो वो पैसा कहीं तो जा रहा है। वो पैसा शायद इमर्जिंग मार्केट में बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है, जिसको हम लोग स्मार्ट मनी का मूवमेंट देख रहे हैं। तो आपका 50% का डिसीजन तो ठीक लग रहा है, बट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट रखिएगा, जैसे मिनिमम 10-15 स्टॉकों में, और रखिएगा तो ब्रांडेड में ही, जी क्योंकि आप समझ गया। गोल्ड से मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना एक कि आप बात गोल्ड से मूव बताइए, कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं स्मार्ट मनी, यू डोंट मीन इट बाय स्मार्ट मनी इंडेक्स सर, है ना? नहीं, स्मार्ट मनी इंडेक्स की बात नहीं करें। स्मार्ट मनी स्मार्ट वो मनी, है, स्मार्ट मनी वो है जो बहुत फास्ट स्विच करता है चीजों में, बहुत ही फास्ट, और वो कभी भी इस तरह से नहीं रहता कि कभी कैश पे बैठा। वो जनरली बहुत तेजी से स्विच करता है, कभी करेंसी की तरफ अप्रिशिएट होगा तो कभी बॉन्ड की तरफ भागेगा, तो कभी कमोडिटी की तरफ भागेगा, तो कभी इक्विटी की तरफ भागेगा। वो बहुत स्मार्ट है। वो 100 रुपए का स्टॉक 1000 रुपया करने के लिए नहीं बैठा है। वो बस जहां पे इनबैलेंस देखता है बहुत तेजी से आता है। तो जिस तरीके से मार्केट डाउन था और गोल्ड भी डाउन था, इसका मतलब कुछ तो स्टोरी हो रही समझ थी। गया। गोल्ड ये को आपकी बात आज, गोल्ड को हाँ, गिरना नहीं था। आपने शाम तो जब सफल कर थोड़ा दी। नहीं, थैंक सही यू बात सर। है। अब मैं जी सैनिक सर। सर से एक सवाल पूछूं। बहुत बुलिश हैं, बहुत अच्छा गाइड भी किया मुझे 15-200 से। मैं डायरेक्टली जानता नहीं हूँ, जिस तरीके से भी उन्होंने पोस्ट किया, स्पेस किए, या किसी अलग ग्रुप को भी मैं था, उसको बहुत अच्छी तरह सिखाया। सैनिक सर ने कभी ये नहीं मुझे बताया कि क्या ऐसी आसमान पे ऐसा क्या बादल है कि मैं भी बदल लूंगा। वो कुछ तो सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं। Sir, नहीं, यू अभी कैन गो I'll इन answer इंग्लिश it. या मैं तो क्या होगा, मैं मेरा हिंदी आप इतना हंस पड़ेंगे कि आपकी आई न्यू इट सर। या no so what are you asking me, why I became bullish or what? नहीं, I have understood all your points, what you say, why you are bullish, what are the reasons, what long history you had, but some cloud somewhere in your brain, amphibian brain maybe, you must be having some idea. If this happens, I'll start scaling down. Yes, there are many such things which if they happen, then I will definitely scale down. Okay, so now I can list in terms of something new which can happen which we are not aware of. Let's say there is a China-India conflict that's gone, because directly India will get affected. In China and Taiwan, we may not get affected so much. So it all depends on what kind of the black swan which can come. So believe me, when I say I'm bullish, it doesn't mean that I'm just sleeping on it and not worrying. I am one of those great paranoid guys who keep worrying all the time. So my wife doesn't like me so much because I keep worrying even at this age. What can happen? Where, I keep wondering as to what's happening in Africa for that matter. Or, I mean, things which may not be really required. I worry about everything, but still I could miss something. So right now, I believe that we are on a good wicket. If there is something directly affecting India, certainly one has to get worried. It can be things which I don't want to speak here, but it could be something in the political scenario for that matter. Or it could be, as I said, a direct war between China and India. Then certainly we'll have to get worried. I used to think about monsoons. Monsoons, now we have got a good clean monsoon. So I don't have to worry about that too much. I used to think about the Ukraine war at one point of time. But now I've realized that Ukraine war is now in the background for even the people who are fighting that war.
or people in the surrounding countries. So every time a new, well, let's say, worry comes, I just try to analyze it and saying how much it can affect us. So right now my worry is political something happens. Second is this China attacking India. Attacking India. This is so monsoon is gone. Monsoon is good, so there is nothing to worry about it. For me, political instability and external, problem between China and India, which can happen. No, you can't say it will not happen. If it happens, these two things certainly worry me. But right now, touch wood, nothing has happened. So I'm keeping my, cheerfulness alive. Thank you, sir. One more point that I would like to add is about the positive point. As far as medical inflation is concerned, particularly in tier 3, tier 2 and tier 4 cities, it is coming down sharply. All because of government and state policies to introduce various free schemes. So that will also be a big pocket booster for lower and middle class and inflation beating. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. So that is adding up a huge. I live in a tier 3 city. That is adding up to consumption because medical is now not a bother in their head if somebody is ill there in their house. So that is one other positive if you consider that. Yeah, I sit in a very small town, sir. Yeah, I take your point. I sit in a very small town. For most part of last 2 years, I've been sitting in a small town. When I go out, I can see that. You talked of medical. Certainly, today, around the parks which I visit, you have the, people coming and doing testing and that kind of thing. I mean, it has gone very deep. I'm sitting, as I told you, I'm not in the metros or the mini metros. I'm just in a much, much smaller town. And I can see that all around. That's true, sir. Thanks again for taking space, sir. Thank you. Thank you. Mr. Derek? Mr. Sarthak? Mr. Sarthak, are you there? Mr. Derek? I think both have lost the connections. आई थिंक विनय हम लोग का टाइम भी ओवर हो चुका है तो मेरे ख्याल और रिलेवेंट क्वेश्चन भी नहीं है अपने टॉपिक के हिसाब से। करने के पहले मैं हिंजा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा भाई में। जी हाँ जी, Ms. Hinja, what do you think we are expecting inflows into India from various parts, and whether in investment or in markets or bond market, what do you think the government should do to attract the funds more aggressively in the future, in your opinion? What kind of reforms they can do at different areas? I think a lot of the reforms the government has already started beginning. I think the cleanup of the balance sheets has been something which has been significant. Labor is something that obviously we will need to look into a lot more seriously. But it's such a political hot potato that I'm not too sure any government will even want to touch it to the extent that they realistically should be touching it. Also, there is another issue associated with labor in the sense that, like I said, that now whatever manufacturing or whatever activities we are looking at, it's going to be in terms of IR4. So IR4 automatically means a lot of automation, which means a lot of those kind of jobs will be at risk. So that again, sort of brings that question that to what extent will any government want to touch it? Because as we can see that any government currently, whether it is state, whether it is central, it is full of welfare policies and doles and things like that. So that is one aspect of it.
In terms of legalities, I think yes, a slightly better system of compliance where capital gets better protection. I think that is something which we discussed in a couple of our spaces. That is something which is going to be important because as we are going to move into the bigger leagues, any big money, especially if we are looking at more of institutional big money, that is in terms of pension funds and insurance companies and things like that, then they will obviously look at better compliance, better security for their capital. Whether that will mean some kind of better judicial system. Again, like I said, hot potatoes, difficult to touch. We're also looking at an election year in a couple of years, so um, so that bit is obviously one issue. And I think in terms of manufacturing, the one thing that is obviously there is having a much more clear land bank, which I think some states have started implementing, because as Sanik sir is also saying that he's looking at the boost coming in terms of manufacturing. McKinsey is also saying that it's looking at India becoming the preferred manufacturing destination. Now, manufacturing typically for anyone to set up a plant, what are the basic requirements, right? I mean, the capital is not in doubt, because obviously if they are coming here, they know they have the capital, so they obviously need the land, they need compliance, they need to navigate red tape, and they need to have security for their capital, and obviously better labor policies, better union policies, things like that. Now, some of these, I believe, whatever the government can do, whatever else is possible, it will happen. The rest, I'm not too sure in terms of how much the government will actually do something. And which is why I think, I even said that is the reason why emerging markets are always called emerging. It's for a reason that everything is not perfect. There are a lot of risks. I mean, in fact, if we go by that logic, when all the big money put money in China, they actually faced far bigger risks. Of course, China gave them returns beyond everything. But today, with their real estate companies defaulting, there is no security for their capital. So that is the reason why emerging markets are emerging markets. But I think, because it's a democracy, we have a stable political system, things should be much better. I mean, I don't know. Does I got that. Vipinji Sainik sir have any additions they'd like to make? No, Inja, you're good. I'm okay with whatever explanation. Thank you. Thank you, Himja. Thank you, sir. Sir, we have last one speaker. We'll just take that and then we'll wind up. Mr. Market Memes. Yeah, hello. Thank you very much, Vinay. I'm not here with any question actually. I'm here just to thank you all, क्योंकि आप चारों ने जो इतनी मेहनत की है, और that too without any self-interest and all, I really appreciate that. And I am from COVID batch only, very new to the market. पर मैं इतने दिनों में जितना सीखा, जो भी मेरे जैसे नए लोग सुन रहे हैं स्पेस को, उनको मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैंने ट्वीट भी किया है पहले, फॉलो वन और फॉलो नन. या तो आप एक ग्रुप को फॉलो कीजिए, तो आप नो डाउट आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे. पर अगर आप सब जगह से कुछ ना कुछ, अगर इफ यू वांट टू ट्राई टू डिग समथिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर, ईच एंड एवरी माइंड, देन यू हैव एंड अप गेटिंग एनीथिंग, दैट्स फॉर श्योर. तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू अगेन. और आई हैव मेड मनी बिकॉज ऑफ यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. एंड विनय भैया ने भी जो बोला था ना कि विपिन भैया ने जो बोला था, विनय भैया ने भी बोला था कि आप लोग हमारे ट्वीट से भी नहीं बना पाओगे पैसा जब तक आप खुद लर्न नहीं करोगे. लेकिन इसमें क्या होगा, खुद की लर्निंग को अगर थोड़ा सा डायरेक्शन से मैच करें और सिर्फ एक को फॉलो करें या एक ग्रुप को फॉलो करें, बिकॉज मैं एक बोलता हूँ तो आप चारों इसमें शामिल हैं, तो आप पैसा बनाएंगे इस मार्केट में इनिशियली. क्योंकि इसकी लर्निंग में लगेंगे 8 से 10 साल, पर इनिशियली आप क्या करेंगे, 8 से 10 साल सीखना है तो कोई भी एक ग्रुप को फॉलो कीजिए एंड यू विल मेक मनी, दैट्स फॉर श्योर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much. विपिन भाई, वाइंड अप करें फिर. हाँ, एक बार सैनिक सर से बोलते हैं. सैनिक सर प्लीज इसको कंक्लूड कर दीजिए एंड फिर क्लोज करते हैं.
Thanks to everyone who has come. And market memes, please don't call yourself COVID batch. It could be a vaccine batch or in the batch when the biggest of opportunity came. Like I come from 1991 batch. I can say India was bankrupt, or I can say India was giving us the biggest opportunity. So I think you should look at it as the time when 7.5 may not ever come for many years, or may never come at all. So please think about it like that. Okay. And thanks once again, Vipin, Vinay, and Imja, and Navru, who did a splendid job as usual. And I think whenever all of us join together, it is the sum of the parts. The sum of the parts are always greater than the whole is always greater than the sum of the parts. I'm also happy that people did ask very relevant questions, and we tried our best to answer them. And if we have mentioned some stocks, especially I have mentioned some stocks, they're not there for as investment advice. It is just to give you an illustration of what a PLI has done or what you could do in terms of gold. So kindly take it in that spirit. Please don't go ahead and buy whatever I have said. And I would like to just tell people, just read, just analyze, just don't take our words as gospel truth. I myself am telling you, I've done 30,000 plus mistakes in life. We are not always correct. So please analyze what we are saying. And then I think then and only then you will make money, good money. And I think this bull market has got a long way to go. And I think quite a few of us agree here. I'm only feeling a little bit bad that a lot of people had this audio problem. So I'm complaining to Twitter. I requested others to complain to Twitter, and hopefully, the spaces will become much better as far as user interface is concerned. Thanks once again for staying up on a Saturday evening, missing the India-Pakistan match. That itself speaks highly of your interest in, coming to our spaces. We're grateful for that. Thank you and good night. Thank you, everyone. Good night. Thank you, sirs. Thank you, everyone. Have a good weekend. Thank you.